Hello everyone. My name is Vasant Dabholkar and I achieved All India rank 76 in this UPSC Civil Services Examination of 2022. First of all, talking about my journey, uh, I come from Sindhurg district of Maharashtra itself. I completed my entire schooling in Jilla Parishad school in Marathi medium. Then I went to engineering, mechanical engineering from Phenolics College in Ratnagiri. So, starting about my strategy, will be sharing the same. And note down, UPSC comprised of three sections like prelims examination, mains examination, and then interview or test for that sake. And each and every part of this examination need a different kind of skill set. For example, you might have all seen this year's prelims paper like 2022, and most of candidates have given the same. You can see the paper, the unpredictability has increased in this paper, but the one thing which is common, that is like your basic knowledge about the prelim syllabus. Like whatever the content of prelim is there, if you are very thorough with it, then it becomes easy for you to guess the answer, or you to conclude this option is the correct. For example, till last year elimination technique used to be there. Like all toppers or all the mentors, all the teachers used to say that you should develop a elimination technique, and with it you can get a optimum score which is required for clearing the cutoff. But from this year onwards, like from this year, the strategy has been little bit changed. Like elimination technique has been eliminated, so the lot of memes were coming up after this prelims paper, that elimination technique has been eliminated by UPSC. So that way the unpredictability has increased, but no doubt that your basic knowledge will have a say in deciding like how many questions you will attempt and how much score you will get. Fine. So I'll divide that into the three. So prelims means an interview. So for the prelims, your basic sources are like very important. For example, when it comes to the history, like ancient and medieval history, like if you have seen the PYQs, the some kind of themes get always repeated. For example, in ancient history, like in, Indus Valley civilization and the archaeological sites of the Indus Valley civilization are very important. Like मोहनजोदारो में क्या मिला, या उसके जो बारीक बारीक डिटेल्स जो है, that comes very important when it comes to the ancient history. Jainism and Buddhism, each year almost one of the question get oftenly repeated about Jainism and Buddhism, but not the traditional one. Each year they come up with the new kind of thing when it comes to the these two faiths. For example, they'll coin a term and they'll ask like this term is related to which. uh, Even they ask you a specific text, and they ask you like this text belongs to which of the following. So that way some kind of basic knowledge if you have, then it becomes easy to guess the answer. एंड हिस्ट्री का जो सिलेबस है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द एंशिएंट एंड medieval हिस्ट्री, some kind of themes you need to work upon. For example, generally they ask ancient में when they ask term, generally it is on the either land related thing, like last to last year the question was Kulavapa and Dronavapa, and they asked like Dronavapa and Kulavapa, these terms related to which thing. So generally if you see the themes of the UPSC prelims paper, the land related themes they are asking, or the taxation related things they are asking, or the coinage related things even they are asking.
So generally the war related terms or the battlefield related terms UPSC is not asking, but when it comes to the ancient or medieval history, these kind of themes oftenly get repeated. Same goes for the Jainism and Buddhism. The themes oftenly get repeated. So if you have seen the PYQ and just diving deep into the PYQ, you'll get to know like what kind of questions they are asking. Same goes with the economy, that inflation, balance of payment, forex trade like dollar or rupee, like if अगर डॉलर की प्राइस बढ़ी तो रूपी में क्या लाइक क्या फर्क पड़ेगा, या एक्सपोर्ट कितने बढ़ेंगे, इंपोर्ट कितने बढ़ेंगे, काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफनली गेट रिपीटेड. और लाइक उनकी फॉर्मुलेशन जो होती है क्वेश्चन की वो बदलती है, पर मेन क्रक्स तो वही रहता है. सो बेसिकली अनप्रेडिक्टेबिलिटी हैज डेफिनेटली इंक्रीज, देयर इज नो डाउट. Or none test series in the market can beat the way UPSC designs the paper. But it doesn't mean you should not give the mock test. Mock tests are very important. Like in my first attempt I gave like around 60 plus mock tests, and that have helped me in solving the prelims paper in 3 rounds. So how many of you are aware of the 3 round strategy of the UPSC prelims paper? Just raise the hand. Otherwise, I'll. Okay. So what happens is like when you solve the prelims paper, generally a student do is like they start with the first question, they end with the 100th question, and this comes way like जो 3 आवर्स 2 आवर्स का जो पेपर रहता है उसमें पूरा का पूरा कवर हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन टू 100 क्वेश्चन. बट 3 राउंड स्ट्रेटेजी इज समथिंग मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आर सजेस्टिंग, इवन आई practice that and I have helped from that. Comes is like first round में it goes around like 55 minutes, and इसमें all 100 questions look through होते हैं, और solve actually एक 30 to 40 questions ही होते हैं, 30 to 40 questions. तो इसमें क्या होता है कि तुम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, फास्ट लुकअप करोगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे और उसमें वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो आपको क्लियर कट पता है. फॉर एग्जाम्पल, राइट टू मैरिज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट. तो आर्टिकल 21 is generally all aspirants generally know. So such kind of 25 to 30 questions will be there. There's that we can easily guess, or that we can easily get to know that this is the answer of this question, right? ऐसे ज्यादा नहीं होंगे क्वेश्चंस, जस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस होते हैं. मेरे तो उतने अटेम्प्ट होते हैं कि कोई कोई बच्चों के 40 तक भी अटेम्प्ट होते हैं. सो लाइक वाइज इन फर्स्ट राउंड यू हैव टू स्क्रोल थ्रू एंटायर पेपर starting from question 1 to question 100 in just like 55 to 60 minutes, like 1 hour. और उसमें थोड़े क्वेश्चंस हमें जो इजीली परसेंट पता हो कि लाइक यस दिस इज द आंसर, देन वी जस्ट अटेम्प्ट इट. इन सेकेंड राउंड व्हाट हैपेंस, लाइक हमने पहले पढ़ा होता है पूरा पेपर, राइट? पूरे पेपर से स्क्रॉल थ्रू किया होता है, तो सबकॉन्शियसली आवर माइंड process that questions, and this is the experience of all the aspirants that when they come to the second round, उनको जो पहले राउंड में किसी का आइडिया भी ना हो पर कहीं भी पढ़ा होगा, लाइक 6 महीने पहले 7 महीने पहले, तो वो याद आना शुरू होता है काइंड ऑफ, एंड you get a good and correct answer in the second round. And in third round you have to complete the paper in like second round almost uh, goes for 30 minutes, third round as well as it goes for almost 30 minutes. इसमें पूरे 100 क्वेश्चंस आपको देखने तो है, पर उसमें अटेम्प्ट तो मोस्टली लाइक 40 to 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं, और डिपेंड ऑन द पेपर बाकी के क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चंस आपके थर्ड राउंड में होते हैं. थर्ड राउंड में क्या करना है कि लाइक most of the toppers are suggesting, and even I followed that strategy, like 80 plus attempt is 80 to 85, yeah, 85 86 is even optimum attempt one can do. But if you are attempting like less than 70, then the probability of getting correct questions and getting wrong questions get somewhat imbalance, and there comes like missing the cutoff. So most of the mentors and teachers are even suggesting that you should attempt at least like 80 plus.
That is the optimum attempt. And if you are solving the prelims in the 3 rounds, then it becomes easy to see entire paper in 3 go. सेकंड राउंड में टाइम क्यों कम लगता है? क्योंकि फर्स्ट राउंड में सॉल्व किए होते हैं, उन्हें हम ज्यादा लुक नहीं देते सेकंड राउंड में। और थर्ड में भी यही होता है। थर्ड में 30 जो मिनट्स लास्ट के हैं, उसमें आप आइदर बबल भर सकते हैं कंप्लीट, या बाकी की फॉर्मेलिटीज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम लाइक रेस्ट जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, या 10 to 20 क्वेश्चंस, देयर यू आर गेटिंग आइदर 50-50 आर करेक्ट, और 75-25। वो जो प्रोबेबिलिटी रहती है ना, कि दो ऑप्शन मैंने इलिमिनेट कर दिए एबीसीडी में से, ए बी सी डी में से ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, इसमें दो में कंपटीशन है, तो ये जो ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग है और इसमें एक तो कोई चूज करना है, तो 50-50 जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आप लास्ट राउंड में करोगे, राइट है? each year what happens is like when you solve the test series, like यूपीएससी के पिछले पेपर में जो थीम्स रिपीट हुई है वो टेस्ट सीरीज में आती है, पर हर बार पैटर्न अलग होता है। यू ऑल नो दैट। फॉर एग्जांपल इन आई थिंक इन 2020 अटेम्प्ट, आई थिंक इन 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर द स्पोर्ट वाला क्वेश्चन केम अ लॉट, like this award, that competition and international awards and everything. So in a way, next year test series, lot of such kind of questions got repeated, but in that UPSC paper, the upcoming paper, the theme got cancelled, no sports question. So that way, no matter how much you rely on the test series, again the paper will be unpredictable. So you should accept it, like this is unpredictable, and whatever knowledge I have, I should be calm, composed, and I should attempt it. Like in ethics paper, we use the term nishkam karma. You all know the term. In ethics value addition, we use that term nishkam karma. Means we have to give our 100%, we have to do our hard work, and just like whatever the results will be there, we should leave it on the supernatural thing. We should not think about what is the fruit of our action. So that way prelims, it's somewhat like that. Like whatever hard work I am putting in, I should devote that hard work fully. Rest is the supernatural, or the whatever the faith you have, that will be taken care of. So that way the unpredictability is there. You should accept it, and with a calm composed mind you should go there. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनका ये प्रॉब्लम है कि हम प्रीलिम को अपनी लाइफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बना देते हैं, और इसमें इतना हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि प्रीलिम्स में जो गेस वर्क करना होता है, या जो काम कंपोज्ड माइंड से ऑप्शन चूज करना होता है, तो उसमें हम गड़बड़ कर देते हैं। So that way it's very important for you to become calm composed when it comes to the prelims paper, right? In the evolution, my optional is anthropology, so there is one concept like human brain have two kind of minds, like monkey mind and human mind. And when the crisis situation comes, now for example if tiger is coming in front of me, then my human mind directly switch from human mind to the monkey mind, and the monkey mind is very wanderer. It runs here and there, and there is no solution as such, and that just roaming around here and there, because that's our evolutionary line. So that way you should not switch from human mind to a monkey mind at any cost when it comes to the any stage of UPSC, right? So prelims is such thing, like you have to practice a lot. There is no kind of loophole to the hard work, that you have to put in a certain amount of hard work. Then the prelim is like that. And sources you all know, like I personally used like for the ancient India, there is Poonam Dalal's book. I just made some kind of micro notes, but in my first attempt, second attempt, there are a lot of micro notes of different coaching classes are available. I just used them, so no specific book for ancient and medieval. When it comes to the modern, there is gist of spectrum, I just used that. Um, Rest polity Lakshmikant only, and that to a specific part of Lakshmikant. Like after the Supreme Court, High Court wala topic, there are a lot of constitutional bodies like CVC, UPSC, CBI, and other things. So such kind of topics do not get reflected when it comes to the UPSC prelims paper. So for the prelims, you just have to focus on what are the themes get repeated, and you just have to focus on that only, right? All are clear? Any other question for the prelims related sources, or other the confusion related thing? Yes, CSAT. It's a very important part. When it comes to the me, I haven't studied much of the CSAT, frankly speaking.
because when I gave the attempt, like in 2020, my first attempt was there. 2021 second attempt and second interview in the same attempt. So at that time questions were little bit pretty and the question paper was sane. But nowadays it's insane. So you have to practice CSAT. I think Agrawal sir's book is there for the SSC and banking related thing. So you should do the topics which are related to actual UPSC paper only. फॉर एग्जाम्पल स्पीड या रेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, या दो दो ट्रेन ऐसी सामने से जा रही है, अपोजिट जा रही है, तो फिर इसका स्पीड क्या, एक इंसान यहाँ खड़ा है वाले क्वेश्चंस, एक एक काइंड ऑफ थीम दैट गेट ऑफनली रिपीटेड. द अनदर थीम इज लाइक एवरेज सम, जो होते हैं कि बच्चे इतने हैं, स्टूडेंट का एवरेज एज इतना है, टीचर का एज ऐड किया तो क्या होगा, वाले जो एवरेज वाले क्वेश्चंस होते हैं. सो ऐसे क्वेश्चंस की कुछ थीम्स है या प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इसमें से हर ईयर एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, राइट. तो पीवाईक्यू देख लेना पिछले 5-6 साल के, और थीम्स के नंबर्स लिख लेना कि एवरेज में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पीड में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, average sum, or etc etc. So just do that topic very focusedly rather than doing entire CSAT or entire जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो एसएससी सीजीएल और बैंकिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं. स्टूडेंट्स आर डूइंग दैट एंड वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, बट rather you should do the things which are actually being asked in the UPSC paper, right? Same goes for the passages. The one thing I observed is like when you apply your common sense when it comes to the UPSC passage papers, it gives really good fruitful results. फॉर एग्जाम्पल 2020 और 2021 का पेपर ऐसा था कि पैसेज पढ़े बिना आप अगर ऑप्शंस पढ़ लेते हो तब भी कुछ कुछ आंसर्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर डेमोक्रेसी पे कोई एक पैसेज है तो एक ऑप्शन ऐसा आता है, ऑल डेमोक्रेसीज आर फ्लॉड, और ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट. वैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आते हैं. So these are some statements which you should eliminate by seeing the same. Like ऐसे आते हैं कुछ कुछ options. So that way it's becomes very easy that like without reading the passage you can save your time, right? So PYQ देख लेना when it comes to the CSAT. Observe the themes, like what kind of themes get repeated, and then work upon that, right? Here comes the mains paper, and this part will be very interesting for you because I think you all must be in starting phase of your UPSC preparation, right? All must be. So this will help you, like when you are doing the mains preparation, how you should proceed for the value addition. So what is value addition is basically like UPSC मेंस में बहुत कंपटीशन रहते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन, like around 10,000 to 13,000 people will be writing the mains paper, and out of that only 3,000 people will be selected for the personality test, right? And even when you see the mark sheet, means score play a very crucial role when it comes to your rank. So mains is something you should not neglect at all. So when it comes to the polity, you can directly start with the article. As we discussed earlier, governor पे question है, institution of governor. From article X to article Y, the institution of article has been envisaged in our constitution. And whatever is there in the question, you can directly mention same in the introduction. When it comes to the institutions like legislature, जो act और law से अपनी authority derive करते हैं. For example, CBI. Last year 2021 mains they have asked the question on the CBI. So directly Delhi Special Police Act, ये एक एक्ट है, उससे CBI को पावर डिराइव होती है. It's not a constitutional body, right? CBI. So that way the legislation you can mention the same in the introduction. Article, act or law, whatever it may be, right? और sometimes you can start with the current event as well. अगर specifically वो current event के बारे में हो, then you can start with the current event. But what I used to do is like I used to start with the constitution article itself, and then in between the body I used to mention the current event.
when it comes to the polity. Rarely I used to start with the current event in introduction, but I used to mention the same in the body. When it comes to the governance, you can start with the definition or data facts. फॉर एग्जाम्पल एनजीओ है तो एनजीओ की डेफिनेशन बहुत रेयरली वर्क होती है, तो उस टाइम में जनरली डेटा और फैक्ट से ही डेटा और फैक्ट्स का यूज ज्यादा करता था. डेफिनेशन डेटा और फैक्ट व्हेन इट कम्स टू द गवर्नेंस. गवर्नेंस में चार पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एनजीओ है, एसएचजी है, वल्नरेबल सेक्शंस है, सिविल सोसाइटी है. लास्ट लाइक 2022 मेंस में सिविल सोसाइटी पे क्वेश्चन आ गया था, या आई थिंक इंस्टीट्यूशनल डोनर्स पे क्वेश्चन आया आया था. दैट वे डिपेंड ऑन द क्वेश्चन यू कैन फ्रेम द introduction, body, conclusion. When it comes to the IR, you can start with the current event. That's the best way to start. उसमें ये दिखता है कि आपका जनरल अवेयरनेस कितना है, ये भी एक पार्ट है. या डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट विद द प्रिंसिपल और द थियरी बिहाइंड दैट कंसेप्ट और दैट ऑर्गेनाइजेशंस ओरिजिन और व्हाई इट वाज फॉर्म. फॉर एग्जांपल G20 पे इस साल क्वेश्चन आ सकता है जो अपकमिंग मेंस है, क्योंकि दिस ईयर G20 समिट इज गोइंग ऑन. सो सम काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन ऑलरेडी प्रेडिक्ट. एससीओ समिट भी लाइक दिस ईयर द होस्टिंग ऑफ एससीओ समिट इज विद इंडिया, सो एससीओ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, या मिक्स भी आ सकता है G20 और एससीओ के बारे में. So likewise, you can prepare the some kind of intro body, introduction, conclusion beforehand, right? Clear? We'll move to the GS3 part. So GS3 में थोड़े diverse topics है. Firstly, economy part. Basic economy के बारे में वो क्या concept है या current affairs that you can start. Current और concept. Current और concept. When it comes to second part is agriculture, and this is something very important part, and each year they get 1 to 2 questions on the agriculture. The same, what is the concept, what is the current advancement. Current is something very important, either concept or current. The third important part is science and technology. साइंस में आप डायरेक्टली टेक्नोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं या डिमिस्टिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 5G टेक्नोलॉजी पे आ गया, व्हाट इज 5G टेक्नोलॉजी? सिंपल. क्वांटम कंप्यूटिंग पे आ गया, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग? या साइंस में अगर क्वेश्चन आ गया आपको नैनो टेक्नोलॉजी, लाइक व्हाट इज द बेसिक ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, डायरेक्टली द डिकोडिंग आइदर करंट और कंसेप्ट सेम. Then comes very important topic, internal security, and you should not at all miss it. And अगर आपको GS3 लेना है ना, मतलब स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट आप इंटरनल सिक्योरिटी से स्टार्ट कीजिए. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट एक्चुअली फीचर्स यू गुड मार्क्स एंड इट्स मच मोर प्रेडिक्टेबल एज वेल. एक सेट 5-6 टॉपिक्स है. नक्सलिज्म है, मिलिटेंसी है, इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है, साइबर सिक्योरिटी है, मनी लॉन्ड्रिंग है. तो ऐसा सिलेबस आपका पूरा याद होना चाहिए. एट द सेम टाइम फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक के लिए अगर आपके पास नोट्स रेडी हो तो इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आर वेरी इजी. फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू राइटिंग द मेंस पेपर, जनरली 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए आपके पास एक 7.5 मिनट होता है, मोस्टली 7 मिनट्स. अगर आपका क्वेश्चन के जो नोट्स है, माइक्रो नोट्स टू बी स्पेसिफिक, अगर आपके रेडी हो, पूरे इंटरनलाइज हो, तो दैट वे यू कैन एक्चुअली रिड्यूस योर टाइमिंग फ्रॉम 7.5 मिनट टू 6.5 मिनट. 1 मिनट उसमें बच जाता है, क्योंकि हमारा थिंकिंग हम कम कर सकते हैं, और लाइक वी कैन फोकस मोर ऑन द राइटिंग, दैट टू फास्ट राइटिंग, राइट? So it's very important for each and every mains topic that you should prepare micro notes. सेम गोज फॉर लाइक इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में सेम है, डिजास्टर के लिए भी सेम ही है. डिजास्टर मैनेजमेंट लाइक मोस्टली करंट, क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट में पूछते हैं ना वो करंट बेस्ड ही पूछते हैं. लाइक अगर इस बार साइक्लोन आ गया तो साइक्लोन मैनेजमेंट पे होगा क्वेश्चन, अर्थक्वेक आ गया तो अर्थक्वेक पे होगा, या लैंडस्लाइड हो गया उत्तराखंड में तो लैंडस्लाइड के बारे में होगा. तो दैट वे यू कैन प्रिपेयर दैट वे. इंट्रोडक्शन कंक्लूजन. When it comes to the GS4 पेपर, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट, क्योंकि GS4 में क्वेश्चन प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते. इस साल का पेपर देखो, एक काइंड ऑफ पैराग्राफ काइंड ऑफ थिंग्स दे आर आस्किंग, एंड फर्स्टली तो रीड करने में भी टाइम नहीं है.
और सेकेंडली वो डिकोडिफाई करके इंट्रोडक्शन में लिखे क्या, ये भी टाइम नहीं है। तो बेसिकली जो एसी की लैंग्वेज है वो अगर आपकी डेवलप हो गई, दैट वे यू कैन एक्चुअली स्टार्ट logically in GS4. Same goes for the conclusion. Just the way that the GS4 conclusion should be way forward, futuristic, right? For example, अगर कोई value पे आ गया question, तो we should inculcate the values of XYZ, like XYZ, in the future generation by using the national education policies, value-based education. Or by inculcating these values, we can achieve these SDGs. और ऐसे आप कुछ कंक्लूजन्स रेडी कर सकते हो। या सेकंड एआरसी रिपोर्ट है, मैंने फुल नहीं पढ़ा था कभी सेकंड एआरसी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, बट जिस्ट है अवेलेबल, या सेकंड एआरसी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट यू कैन टेक अवे, you can take the takeaways from the second ARC report, and that you can actually write as a conclusion, right? When it comes to the GS4, I am not writing specific material here because next year कुछ अलग आ सकता है पेपर में, तो this may or may not work. So वो at that crisis situation you should design it tailor made. There is no fixed approach as such, right? So now I'll talk about diagrams. डायग्राम का इम्पोर्टेंस ये है कि दैट कैन एक्चुअली सेव योर स्पेस ऑफ राइटिंग एंड कन्वेइंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, राइट? फॉर एग्जाम्पल गुड गवर्नेंस का एक टॉपिक है GS2 में, तो गुड गवर्नेंस के 8 पिलर्स है, तो अगर आपने उसकी डायग्राम बना दी 8 पिलर्स की, एंड नॉट ओनली डायग्राम बट एग्जाम्पल बेस्ड डायग्राम बना दी, तो दैट कैन एक्चुअली सेव्स योर स्पेस, राइट? यू लाइक 8 पॉइंटर्स लिखने की आपकी बहुत सारी स्पेस बच जाती है उसमें। सेम गोज फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के आंसर में ना 3 पार्ट आते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के 3 पार्ट आते हैं, प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रिकवरी। सो दैट वे उसकी जो जो एग्जांपल्स है या बेस्ट केस स्टडीज है, दैट यू कैन एक्चुअली राइट इन द डायग्राम फॉर्मेट, दैट कैन एक्चुअली सेव्स योर स्पेस, राइट? सो डायग्राम का इंपॉर्टेंस ये आर्ट एंड कल्चर में हर एक टॉपिक पे आप डायग्राम बना सकते हो। लास्ट ईयर का पेपर की बहुत कितने लोगों ने देखा लास्ट ईयर का पेपर GS1 का? ओके, उसमें एक क्वेश्चन है ऑन द सेक्ट। व्हाट इज सेक्ट? इन हिंदी और मराठी वैसे पंथ। This was unpredictable question. Most of the people got confused, like what is sect first of, and it was I think last question or second last question in the paper. So there was lot of scope to the confusion, और उसमें उन्होंने पूछा था कि sect diversity, when it comes to the region, religion, caste. So such very different question was there. So I made the diagram at that time without प्रिपरेशन, क्योंकि सेक्ट मैंने तो नहीं प्रिपेयर किया, बहुत सारे बच्चों ने प्रिपेयर ही नहीं किया कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। दैट वाज लाइक वेरी अनप्रेडिक्टेबल। सो रीजन पे आ गया तो मैंने इतना ही इंडिया का मैप बना दिया था, कि ऐसे मैप्स बना दिए थे छोटा सा, उस पे बॉक्स। और व्हेन इट कम्स टू द रिलीजन वाला पार्ट, लाइक यहाँ केरला है, केरला में मैंने दिखाया थे सीरियन क्रिश्चियन, और यहाँ गोवा में रोमन कैथलिक। दिख रहा है थोड़ा? रोमन कैथलिक यहाँ, सीरियन क्रिश्चियन यहाँ। व्हेन इट कम्स टू द कास्ट, like different caste in Maharashtra come together when it comes to the Varkari Sampradaya and in the Pandharpur. Like we have Varkari Sampradaya in Maharashtra.
सो डिफरेंट कास्ट, वेरियस कास्ट केम टुगेदर एंड मैंने वो सेंट्स के नाम भी डाले थे, डिफरेंट सेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट कम टुगेदर टू सेलिब्रेट द फेथ ऑफ वैष्णविज्म, वारकरी संप्रदाय। सो कास्ट पे मैंने ऐसा बनाया था कि महाराष्ट्र में ही छोटा, कि डिफरेंट सेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड ऑलमोस्ट ऑल कास्ट फ्रॉम महाराष्ट्र केम टुगेदर टू सेलिब्रेट भक्ति, राइट। सो ऐसा बनाया था। रीजन पे भी आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जांपल आई यूज्ड, बट आई थिंक आई यूज्ड द सेंट रविदास सेक्ट इन द छत्तीसगढ़, and that way I just drawn a diagram there. Same goes for this year. The question was significance of bull and lion. एग्जैक्टली। सो उस पे भी आप डिफरेंट आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। एक तो क्या है कि बुल और लायन अशोकन पिलर्स में है, राइट, तो वो एक एविडेंस आप डाल सकते हैं। सेकेंडली एक एविडेंस है पुराणास, पुराणास के जो टेक्स्ट है, तो लाइक कालिका पुराण में लायन का मेंशन है एज अ व्हीकल ऑफ महिषासुर मर्दिनी, दैट वे यू कैन यूज दैट टेक्स्ट, बिकॉज हिस्ट्री में टेक्स्ट का भी सिग्निफिकेंस है। सो एज अ ऑथेंटिसिटी ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग आई यूज द सेम, or when it comes to the bull as a vehicle of Shiva, I use the reference of Shiva Puran. So that way value addition was like either you can represent in the diagrammic format or the schematic or the flow chart or the such kind of India's maps. So when I used to write the, like when I used to draw the India's map, like what I used to do is uh, हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन आया तो ऐसा मैं बनाता था और यहाँ हिमालयस दिखता था पूरा, हिमालयस, क्योंकि क्या है कि इंडिया की जो टेरिटरीज है, तो गुप्ताज के लाइक अशोकास के टाइम पे वो अफगानिस्तान तक थी और यहाँ भी म्यांमार तक गया था। चोलास के टाइम पे यहाँ ये भी है लाइक साउथ ईस्ट एशिया में, तो वहां भी चोलास का एम्पायर गया था। सो दैट वे वो अलग से सेपरेटली दिखाने से अच्छा है कि यहाँ मैं हिमालयस दिखाता था और यहाँ कुछ भी टेरिटरी मार्क करनी है तो आई यूज टू डू दैट, राइट। सेकेंडली इंडियन सोसाइटी में कुछ दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल रीजनलिज्म, तो मैं यहाँ बेलगाव इशू, so Belgaum I used to mention here Gorkha land, I used to mention here Bodo land, I used to mention different kind of regionalism problems in India, अगर रीजनलिज्म पे क्वेश्चन आया। सेम गोज फॉर द कम्युनलिज्म, लाइक जो दो चार राइट्स हो गए थे बेस्ड ऑन द रिलीजन, आई यूज्ड टू मेंशन दैट एज इन द डायग्राम फॉर्मेट, नॉट द फुल इंडिया बट द हाफ। व्हाई? बिकॉज इट सेव्स द स्पेस। एंड व्हेन इट कम्स टू द ज्योग्राफी आई यूज्ड टू ड्रॉ फुल मैप ऑफ इंडिया, इज लाइक वो यहाँ से ये वाला वो पूरा वाला मैप यहाँ, ये व्हाइट स्लेट से आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट accurately, so I'm not writing it, but still, so that way you can practice it, depend on what are the questions, right? Introduction, conclusion clear, everyone? So now we'll talk about what is the answer structure and value addition in the answers, what we can write. Like when it comes to the world history, what I used to do, like we'll talk first about GS1 paper. So GS1 paper value addition. GS1 वैल्यू एडिशन। सो वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आता है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी थोड़े मेरे नोट्स शेयर किए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, वेयर आई कनेक्टेड वर्ल्ड हिस्ट्री विद इंडियन हिस्ट्री। सो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है कि हर वर्ल्ड हिस्ट्री के इवेंट को अगर आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से कनेक्ट करोगे, या what the values of that world history event contributed to the Indian society or to the world, if you can connect the same, then actually that can gives you edge over other aspirants. This is something out of box thinking, right? थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, एंड दैट यू कैन इनकलकेट इन योर आंसर्स, लाइक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, लाइक प्रिपेयर मेंस की जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे, तब आप ऐसी जो चीजें हैं वो आप नोट्स में ऐड कर सकते हो।
when it comes to the Indian society, I used to write the what may be the positive consequences of that event in the future, not current, future. लाइक ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन है, तो ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि बहुत इम्पैक्ट्स है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है ग्लोबलाइजेशन के, निगेटिव इम्पैक्ट भी है। पर फ्यूचर के लिए हमें ग्लोबलाइजेशन में क्या में से क्या लेना चाहिए और व्हाट वैल्यूज वी शुड फोकस अपॉन टू डेवलप आवरसेल्फ एंड टू इवॉल्व आवर सोसाइटी टू अ पॉजिटिव एंड, राइट? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इज इनएविटेबल, अर्बनाइजेशन इज इनएविटेबल, देयर आर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सेम, बट वी शुड नॉट फोकस ऑन द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, वी शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। Like as a future bureaucrats or as a future public servants, we should focus on the solutions. What are the solution of it? Writing rather than writing entire paper critically. Like this is the negative, this is negative. So we should even focus on the positive part or the solution oriented part, right? Getting everyone? So that you can write in the part. Even when it comes to the art and culture, I used to mention the schemes of Ministry of Cultures, that we can promote this art or we can promote this dance form or whatever the archaeological facts are there through this scheme of the Ministry of Culture, to uh, to make the global exposure for that thing. For example, we have Incredible India or Dekho Apna Desh kind of campaigns, right? Or Ek Bharat Shrestha Bharat kind of initiative. So, if that dance form, if that cultural event, if that archaeological site, we can promote the same abroad to export our soft culture, right? So, such kind of points you can mention. There are some Ministry of Culture schemes like Prasad, Hriday, Amrit Dharohar scheme is there. Um, as well as for 3D for 3D pictography of the archaeological facts and the sites, we have Jatan and Darshak app, mobile based app, wherein any person can view the same through their mobile, 3D version of that archaeological site or something. So you can mention the same in the conclusion. That shows how optimistic you are and how you are like ready to promote our culture or something like that, right? So in each topic you can apply your mind so that you can promote the same, yeah, yeah, or you can project your futuristic vision about the same. Hmm? Clear everyone? ज्योग्राफी के लिए मैंने बताया कि एल्यूमिनियम पे आ गया तो नीति आयोग की एल्यूमिनियम की पॉलिसी लिख दो, क्रूड ऑयल पे आ गया तो नेल या हेल्प पॉलिसी वो मेंशन कर दो, या कोल पे आ गया तो कोल के बारे में रिसेंट क्या इनिशिएटिव है वो बताओ, या एफडीआई हमने लिबरलाइज कर दिया, एफडीआई पता है सबको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसके बारे में क्या करंट है उस मिनरल के बारे में, दैट यू कैन मेंशन। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का चल रहा है तो लिथियम पे क्वेश्चन आ सकता है, like we have even found the same in the J and K. That way you can get so you can expect some kind of question, and the same you should prepare some kind of value addition fodder points when it comes to your paper, right? Clear everyone? uh, then same goes for the GS2 पेपर। GS2 में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्रिटिकली इवेल्युएट, क्रिटिकली एनालाइज वैसे वाले आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको प्रो पॉइंट भी लिखने हैं, कॉन्स पॉइंट भी लिखने हैं, और पॉलिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल भी आते हैं। कंट्रोवर्शियल नॉट दैट से एज पर द न्यूज़पेपर्स वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, पर समवेयर यू हैव टू बैलेंस योर ओपिनियन, सो फॉर दैट सेम you have to write like pro points or the positive points. You can use the Supreme Court cases for the negative or the cons points. You can use the Supreme Court cases, and as a conclusion or way forward, you can balance the both. You can balance the both. For example, हर एक बारे में like for example एंटी डिफेक्शन लॉ है तो why it is important वाले प्रो पॉइंट्स आएंगे, राइट? why एंटी डिफेक्शन लॉ इज नीडेड, सो उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का अंडरपिनिंग होगा कि why it is needed और द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और द लीगैलिटी ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट? सबको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ? हाँ, so what are the pro points of the anti defection law? You have to quote the Supreme Court cases or the underpinnings of the Supreme Court judgments. In the cons, how that law can be misused or what's going on or whatever it may be. So Supreme Court cases you have to use. So you have to counter the both so that your own opinion should not reflect that you are either using like either you are against
anti-defection law, or you are promoting what is like what are the misuses of the anti-defection, something like that. In the conclusion or way forward, you have to balance the both. Like these are the provisions of the anti-defection law which can be changed, but the entire law is not bad. It's good and we should need it, but some kind of provision we should relook upon. ऐसा नहीं कि बदल दो आज ही आज, पार्लियामेंट को ये बदल देना चाहिए, ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहिए. दिस शुड बी रिलुक्ड अपॉन. और उसमें भी वे फॉरवर्ड में भी जो कमिटीज बैठी है, लाइक देयर इज वन कमिटी ऑफ नेशनल वर्किंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा एनसीआरडब्ल्यूसी समथिंग. हाँ, सो दैट कमिटी ऑलवेज गिव्स रिपोर्ट्स. और लॉ कमीशन है तो लॉ कमीशन के भी रिपोर्ट्स है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट है. व्हेन इट कम्स टू द फेडरलिज्म, पंछी कमीशन के रिपोर्ट है या सरकारिया कमीशन के रिपोर्ट है. सेकंड एआरसी ने ऑलमोस्ट सब डायमेंशंस में अपने ओपिनियंस दी है. तो यू शुड राइट दैट स्टैंडर्ड ओपिनियन व्हेन इट कम्स टू द वे फॉरवर्ड, एंड कंक्लूजन में उसमें से ही एक जो अच्छा वाला ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचरिस्टिक हो, दैट यू कैन मेंशन. क्लियर? सो इसमें खुद के ओपिनियन से ज्यादा अगर आपने स्टैंडर्ड कमिटीज मेंशन की, देन एक्चुअली दैट कैन ऐड वैल्यू एडिशन टू दैट. फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे ये कॉमन गलती करते हैं, कमिटीज लिखनी है वैल्यू एडिशन के लिए, इसकी वजह से सब कमिटीज लिखते हैं, पर सब कॉमन लिख के आते हैं. फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी में एक प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक है और प्राइवेटाइजेशन पे विजय केळकर कमेटी बैठी थी. तो वो अगर क्या है कि विजय केळकर कमिटी हैज सजेस्टेड द प्राइवेटाइजेशन और समथिंग लाइक दैट, एवरीवन विल राइट दैट. और रेलवे रिफॉर्म पे विवेक देवरॉय कमेटी थी, तो एवरीवन विल राइट दैट. व्हाट्स यूनिक इन दैट? सो आउट ऑफ दैट रिपोर्ट यू कैन जस्ट रीड द समरी, एंड एक दो पिक्यूलर पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू कैन मेंशन. सो वो कमिटी पे हाईलाइट होगी और उसमें ये होगा कि जो अच्छे पॉइंट्स है वहां वो like they'll be get highlighted in your answer rather than writing a generic thing. Same goes for the data and facts. Like we have 29% of land and 71% of ocean, everyone knows that. In 6th 7th standard we have studied the same. So write something which have the authenticity, and that can actually portrays your civil servant like qualities. So use economic survey, use budget, and point out the important takeaways from the same. Like I'm not expecting you to read entire budget or entire economy survey. It's too bulky. It's too bulky. What you can do is like you can read the summaries of the same on the YouTube. There are a lot of summary videos of various faculties, various mentors. So you can go through that, and the important takeaway just list it down. List it down. That can actually help you in scoring good when it comes to the mains, right? सेम गोज फॉर द GS3 पेपर. एक इंटरनल सिक्योरिटी है तो उसमें भी अगर एक नक्सलिज्म पे क्वेश्चन है, तो नक्सलिज्म पे जो डेटा है कि व्हाट आर द ह्यूमन लॉसेस इन लास्ट 10 years वी हैव सफर्ड ड्यू टू नक्सलिज्म, so that you can mention. We have different strategies like greyhound is, all are aware of greyhound. What is greyhound? Hurt, सुना है? हाँ. सो ऐसे जो पुलिस फोर्सेस है जिन्होंने अच्छा काम किया है, that you can already prepare, that you can note it down, and that you can actually mention in your mains paper, right? So I talked about value addition, data, ready-made introduction, conclusion, diagrams. Art and culture pe diagram is must. I in starting I used Anudip Duru Shetty's notes, like on his Telegram channel and on websites. He have drawn various diagrams of all the art and culture wala thing. I added my own diagrams to the same, and I'll upload the same in my Telegram channel too. So that might help you, and you can add yours too. So that you, when you will be topper, the next aspirants will get all the concise material of all the topics. So everything is clear for the mains. Any doubt when it comes to the mains preparation? I'll talk about essay and ethics right now. So apart from for the GS 1 2 3, any doubts? Value addition, you can refer standard books, like whatever the books you are reading, they all have the value addition material like keywords and everything. It's just that we do not look it. मतलब हम देखते नहीं, वो हम नजरअंदाज करते हैं, पर सब जगह वैल्यू एडिशन का मटेरियल दिखता है. फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ तो आई थिंक आई जस्ट रेड द one of the Facebook post in which the Rabindranath Tagore statement was there, that when he saw the Jagannath Puri temple, he astonished that here
language of stone surpasses language of humans. How beautiful the statement is, right? Here, language of stones surpasses the language of humans. So such kind of statement you can actually use in your conclusion. Like what Vivekananda said about uh, uh, like Indian sculptures or any dance form, if someone has commented, then you can mention the same in the conclusion or introduction itself, right? So validation material is everywhere, just you need to look it that way. Hmm? Um, there was one incidence of my personality test, that how I used the same. Like in Sadashivpet, there is Ubhe Samose wala. You might have seen the same on the Nyan Prabodhini road. So what he gives, like samosa sambar. So me along with my friends, we used to eat that sometimes. So uh, like हम बहुत अमेज हो गए कि ये कौन सा like dish है, like samosa sambar. Samosa is from north, sambar is from south, and in Maharashtra we are eating samosa sambar, right? So it's very joke, right? But still like somewhere that was back of my mind, that in Maharashtra it's actually composite culture between north and south. Like in north there is roti or kind of wheat related dishes. In south the rice related things are abundant, and in Maharashtra we eat both. जेवणा अगोदर पोळी किंवा चपाती असते आणि नंतर आपण भात घेतो. So that way we are the composite culture between the north and south. In my personality test, I got a question like, tell me a thing which you are proud that you are from Maharashtra. So I told them, like in Maharashtra, it's a bridge between north culture and south culture. Bhakti parampara emerged in the south, went through Maharashtra. We added the blend of Varkari Sampradaya, and it got flourished in the north. Same goes for food, culture, language, and everything, that we are composite between the both. For Marathis, Indian identity comes first and then our sub-regional identity. Even the same, I quoted the same incidents, that in Mumbai, you can see like if two Marathi people are talking, then they start in Hindi. Then by their slang accent, both get to know that both are Marathi. Then they switch to Marathi. It's a funny part, but I quoted the same, that we are open to other cultures. That's why we are cosmopolitan. So the attitude about other people, that Marathis are more like son of soil policy or something like that. I just turned that for Marathis, Indian identity comes first, and then our sub-regional identities, right? So like if you are open to other ideas, now that can actually help you in your preparation, especially for the personality test. And I got one of the good marks, 195 this year. So that even created light movement, that all board panel members had the smile on their face, like when they got that incident, that two Marathi people are talking in Mumbai wala thing. So that shows you a general observation, at the same time that gets comfort kind of thing for the panel members too. So such way you should open your eyes, you should look everywhere, and whatever is there for the UPSC you should collect, you should think. Do not prepare the subjects in the isolation. Link economy with the polity. Link polity with the culture. How culture is affecting polity. Each state का जो demography है, how it is influencing the polity of that part or something like that. Where is the Panchayati Raj institution is stronger? Why is it so? Is it having the historical connotations? महाराष्ट्र में ब्रिटिश रूल था, तो उस एरिया में पंचायती राज और पॉलिटी कैसी है? और जो मराठवाड़ा के एरिया है जहाँ वो हैदराबाद के जो प्रिंस थे वो रूल करते थे, वहाँ की पॉलिटी कैसी है? डू दे हैव काइंड ऑफ लेगेसी ऑफ देयर हिस्ट्री और समथिंग लाइक दैट? So do not prepare the same in the isolation. That can actually help you in your preparation, especially personality, right? Validation का भी same. जो कुछ देखना है ना सब्जेक्ट, वो वैल्यू एडिशन की नजरिए से देखो, हर जगह वैल्यू एडिशन मिल जाएगा, डेटा फैक्ट। और रबिश डेटा लाइक यूज यूज मत करो, फ्रैंकली स्पीकिंग। लाइक इन पेपर हर ईयर ईच ईयर दे गिव यू एनसीआरबी डेटा, लाइक दिस काइंड ऑफ क्राइम्स आर लाइक राइजिंग, दिस स्टेट हैव दिस काइंड ऑफ क्राइम। पर क्राइम पे क्वेश्चन नहीं आता ना जीएस2 में, तो यू शुड नॉट प्रिपेयर इट। बाद में पढ़ो आप, लाइक यू शुड रीड इट, बट कलेक्ट द ओनली थिंग विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी। मिलेट्स का प्रोपोर्शन कैसे बढ़ा, ऐसा भी डेटा आएगा। और राइस का कंजम्पशन कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, तो राइस के कंजम्पशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा।
मिलेट पे आ सकता है, it's in the news. So collect only that data which is required for the preparation, right? For the interview you can collect the data which is required for the interview, but for the mains specifically value addition data, syllabus point is the everything for you. सिलेबस पॉइंट पीवाई को, सिलेबस के हर एक पॉइंट पे अच्छा अच्छा डेटा आपके पास तैयार होना चाहिए, रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन फॉर द सेम, राइट? क्लियर एवरीवन? सो आई नाउ टॉक अबाउट GS4 and essay. So what doubts you are having when it comes to the essay and GS4? Philosophical essays. So right now, if you see the trend, all 8 essays are philosophical. So I think the trend is like wanting you to prepare the same. Like officer must have a philosophical blend, you can say, right? They must have a ethical background or something like that, ethical mindset or something like that. They are checking. So when it comes to the essay paper, the strategy is like, I'm not here showing how to write essay specifically, but I'll only talk about value addition material, that how you can gather the same meanwhile your preparation. Same goes for the essay as well as ethics. Same goes for the essay as well as ethics, that do not prepare these two subjects in isolation or silos. You should combine them when it comes to the gathering of the example. If you are in the starting phase of your preparation, devote half hour daily to gather the material of the essay and ethics. अगर आपको डाउट है ना कि आप पढ़ाई आपकी अच्छे से हो रही है नहीं, तो एक पैरामीटर है जेनजी जनरेशन वाला, कि आपकी यूट्यूब की प्लेलिस्ट जैसी होगी ना वैसा आपका स्टडी चल रहा होगा। अगर आप यूट्यूब पे अच्छे पॉडकास्ट या अच्छा वैल्यूएशन मटेरियल ऐसा सर्च कर रहे होगे ना, तो पूरी प्लेलिस्ट आपकी ऐसी होगी कि अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन आएंगे या रील्स आएंगे। So that is one of the indicators. I always tell students that you are studying or not. If you are getting confusion that I am a good aspirant or not, then just scroll the YouTube and just see what kind of content you are having on the YouTube. Like if you are starting reading, sorry, if you are started watching the podcast, then good kind of podcast you will automatically get on your feed of the YouTube, that can actually help you in your preparation. That for example, I used extensively YouTube for my essay preparation, and I got one of good marks last year. I got 139 marks in essay, and this year I got around 131 or 132, something like that, in essay, which is decent score. So how it worked for me is like, I used YouTube for the preparation of the essay. Like uh, uh, अगर ज़्यादा पढ़ाई होती है, लाइक दिन में मेंस जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, लाइक 12 to 13 hours you have to prepare. It's so like very less time, lot of syllabus to cover, notes to prepare. So in that like 12 to 13 hours, I used to take half hour just for my entertainment at as well as information. So infotainment, राइट? सो वैसे आप यूट्यूब का यूज करके, बहुत सारी चैनल्स अच्छी अच्छी है जिनमें बहुत सारा अच्छा कंटेंट है, कुछ जो एनजीओज है वो जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उनके एग्जाम्पल्स है। सो ऐसा जो कंटेंट है दैट एक्चुअली यू कैन यूज इट इन योर एसे। some quotes are there from Upanishads, from the religious philosophy, that you can use it in your answers. For example, there is one quote, sarve jana sukhino santu, sarve jana sukhino bhavantu. It's universal. It means वो सबका भला हो. Same goes for the Buddhism's quote, सब भवतु सबा मंगलम. So these are some universal quotes, and there is no kind of counter theory to that. सबका मंगल हो, इसमें कोई काउंटर क्या ही कर सकता है, राइट? ये सब में यूज कर सकते हैं। सच काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड गैदर। मैंने तो हार्डली 10 कोट प्रिपेयर किए थे अच्छे वाले, क्योंकि मुझे कोट याद नहीं रहते इतने ज्यादा। फैक्ट्स याद रखते रहते, डेटा याद रहता, पर कोट्स इतने नहीं याद रहते। So I used to read them. Out of the 10 universal quote, I used to prepare, I used to note, and I used to use it here and there when it comes to the essay, so that I can add spice to my essay, right? Same goes for the religious philosophy or the Bhakti Parampara's philosophy, or Buddhism's philosophy, Jainism's philosophy, that you can link. For example, in Jainism, there is one thing of ahimsa, right? Non-violence. You can connect that non-violence to the plastic ban or to the climate change. How? Yes, exactly. Non-violence is something like किसी को कुछ भी हानि ना हो, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। सो क्लाइमेट चेंज में हम क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूमरिज्म स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, लाइक
lots and lots of pollutants, heavy vehicles and everything, and that way we are harming the climate, we are harming the creatures indirectly. So how to use the Jainism philosophy in our own life, that we can practice the minimalism. We can go with the public transport. We can use the minimum plastic, or rather than we can shift from the plastic bag to the clothing bag, cloth related bag. So that way you can actually use the philosophies in daily life. Just link it. Do not see the philosophy in the silos, right? सो ऐसे में यही वर्क करता है कि ऐसे में आप कितना आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेस्टल सबको पता है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, वो सब लिखते हैं। पर अगर एक फिलोसॉफिकल कोट है और अगर आपने इंटरनली रिफ्लेक्ट किया उस कोट को, देन इवन दैट कैन ऐड गुड मार्क्स टू योर एसे। इंटरनली रिफ्लेक्ट बैक करना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ दोष होते हैं इंटरनली, हमें एंगर, ईगो या जेलेसी, या ऐसे जो 6 काइंड ऑफ एनिमीज इन भक्ति दे हैव, लाइक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर. So these 6 qualities are there which are resisting us within ourselves. Like our brains are turning enemies of ourselves only sometimes due to these bad qualities. So you can reflect upon that in your essay. Like this quote can help us in countering these are bad values or bad virtues or something like that. So that can actually add the good value addition to your answer. ऐसे का इंट्रोडक्शन में एक दो चीजें है कि anecdotes used to work 2-3 years back, but right now most of my colleagues have used the anecdotes, but somewhere that do not appeal to the examiner, then that actually do not fetch good marks. So that way you can write with the good story of the same. For example, last year there was one quote in the essay that wantlessness is a true philosophy and materialism is a chimera. All are aware? 2021. Wantlessness is a true philosophy, wherein I got 139 marks. Wantlessness is a true philosophy, materialism is a chimera. मीन्स व्हाट कि मटेरियलिज्म चेज करना इज ये माया है, मतलब आई एम कन्वर्टिंग दैट, ट्रांसलेटिंग दैट टू द हिंदी, एंड वांटलेसनेस मतलब इच्छा विरहीन रहना, ये सही तत्वज्ञान है, काइंड ऑफ थिंग वाज लाइक रफ ट्रांसलेशन. सो आई स्टार्टेड विद द आदि शंकराचार्य स्टोरी दैट ही वाज अ मॉन्क फ्रॉम द केरला. He traveled all together to the Kashmir, like Uttarakhand he have his samadhi. So when he traveled to the Himalayas, one of the person asked him, like he came with all the sweater and the jewelry and all the dress and everything, and Adi Shankaracharya was wearing a single saffron clad, just one single cloth was there he was wearing, and that person asked him like, I am getting lot of shivering, I am shivering, there is snow falling and everything is going, and why are you not feeling the cold, or how are you not catching the cold? At that time Shankaracharya reflected that sky is my मतलब आकाश ही मेरा वस्त्र है और भूमि मेरा शेल्टर है. Because whatever needs are there are from inside, not from outside. Rarely there is from outside, but mostly that's from inside. So that story connotes that how wantlessness is a true philosophy and how materialism is a chimera. That way you can start with the story. Same goes for the themes of the essays, like some kind of values will be there which will be common throughout the essays. For example, love, peace, uh, speaking truth, honesty, integrity, such kind of values will be there in ethics and essay. That will be very common, and you can actually reflect back upon the stories which are reflecting all those values. ऐसी 10-12 stories आप prepare कर सकते हैं अच्छे से from our philosophies that are very common regarding all these things, that actually you can use interchangeably in your essays, right? Getting done for the GS part. Any doubts regarding GS 1, 2, 3, 4? Case studies. So case studies is something very important because 20 to 25 marks will be there for the case studies, and you should have some kind of unique approach when it comes to the case studies. For example,
they are asking that you are an officer and this case is happening, you are a commoner, this case is happening, you are a journalist, this case is happening. So you are, वो एक्टर का जैसे होता है ना, अगर एक एक्टर और ड्रामेटिस्ट एक थिएटर पे एक्ट कर रहा है तो वो अलग अलग भूमिका में जाता है और वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिंग करते हैं. सो लाइक वाइज इन केस स्टडीज यू शुड लुक द सिचुएशन फ्रॉम दैट प्रिज्म, राइट. सो उसमें क्या है, आपकी सिविल सर्वेंट लाइक क्वालिटीज उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. लाइक बाय एक्टिंग लाइक दिस, माय इंटीग्रिटी और माय प्रोबिटी विल बी will be there, or if I do not act like this my honesty will be in threat or my truthfulness will be in threat. So आपकी जो वैल्यूज है, जो सिविल सर्वेंट लाइक वैल्यूज आपकी सिलेबस में भी दी है और सेकेंड ARC रिपोर्ट भी बोलता है, तो ऐसी वैल्यूज को आपको केस स्टडीज में दिखाना है कि अगर मैंने ऐसा ऐसा किया तो मेरी ये वैल्यूज सेव होती है, एट द सेम टाइम मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी ये वैल्यूज इन थ्रेट विल बी इन थ्रेट. Like what's the important role of the civil servant is I feel the acting according to our constitution. So whatever values are there in the constitution, that should and that must be reflected in your case studies. और उसमें ऐसा सिलोज में नहीं होता क्योंकि इथिक्स का पेपर ऐसा है ना, बहुत लेंदी है, आपको दिमाग वो प्रोसेस करने में भी टाइम नहीं है. सो आपकी थिंकिंग और जो मेंटेलिटी है वो आपको ऐसी बनानी है कि आई विल बी हैंडलिंग द सिचुएशन वन डे, दैट्स व्हाई आई शुड राइट द पेपर इन दैट प्रिज्म. करप्शन की केस स्टडी है, तो इफ यू आर स्ट्रांगली अगेंस्ट द करप्शन देन ओनली यू कैन राइट द गुड आंसर फॉर द सेम, क्योंकि वहां डिलेमा में ही क्वेश्चन आता है. तो योर vision should be clear that why I want to be in administration. Thinking should be as per that, so that when you write the paper, you can produce the correct answer. Same goes for the personality test. Like personality test is something very different situation. वो जो four walls है वो out of the world रहते हैं, ऐसा I feel, because mock test में हम कितने भी अच्छे answers दे, actual interview is totally different and it's totally game changer. So whatever is there in inside, whatever is there inside you and how you are thinking and everything, that actually get reflected in the interview boardroom. Same. So GS4 paper and interview is something very similar. Essay is not like that because essay में बहुत time मिलता है, तो you can actually add spice to your answers and everything. You need not to write very difficult codes or very difficult language or very like European literature or something like that. That kind of level of language. Like you can read my essays on Telegram channel. They are very simple because I don't know even what are the difficult words. I used to मतलब मुझे डिक्शनरी लगती थी डिफिकल्ट वर्ड को डिसिफर करने में. आई यूज्ड टू राइट द सिंपल essays, but the themes were very different. The analytical skills were different. I used to link various topics, like linking philosophy with the economy or something like that. Like this year I wrote the essay of forest are the best case studies for the economy, right? All are aware of this topic. Forest are the best case study of economy. So I wrote there that अगर बारिश में पानी जब आसमान से गिरता है तब सीड स्प्राउट होते हैं और उसमें से ही जंगल बनता है, मतलब पेड़ बनेगा, उसमें से आगे सीड स्प्राउट होगी और फिर जंगल बनेगा. पर अगर बारिश ज्यादा गिरी तो वो सीड्स रॉटन हो जाते हैं, मतलब they are of no use basically. So that way it can destroy all the seedlings, right? So in economy we need adequate liquidation for economy to run. There must be adequate liquidity. In the liquidity means flowing of the money that should be there to promote the business for the thriving of the economy. But if the over liquidation will be there, what will happen? Inflation will rise and all economy will get destroyed. Example Venezuela, example Iran, hyperinflation. I wrote them. Second example I wrote is like forest protects the tribes inside the forest, and they are the forest dwellers, and their entire livelihood is depend on the same. For example, uh, उनका खाना भी वहीं से आता है, उनका कल्चर भी वहीं से है. Religion is forest link. Forest gods will be there. Everything is linked with the forest when it comes to the tribals. So as forest is protecting the tribals, it's the uh, it's the duty of any economy or any major economy to protect the destitutes or the vulnerable section. So I linked the both, right? Even the same like
if you have read the environment, there is one term detrivorous economy. All are aware? Detrivorous, मतलब decomposition. डिकम्पोजिशन वाला जो इकोलॉजी, सॉरी, डिकम्पोजिशन वाला इकोलॉजी। सो पूरी इकोलॉजी जो होती है वो रन होती है इकोलॉजिकल साइकिल और इकोसिस्टम वी से, बट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेट्रीवोरस एनिमल्स का, अर्थवर्म या इन मराठी शेणकिडे ज्यांना आपण म्हणतो. सो अशांचा पण इम्पॉर्टंट रोल आहे, कारण त्यामुळे इकोसिस्टम थ्राईव्ह होते. अदरवाईज ते खूप सारा वेस्ट जनरेट झाला असता आणि त्याला रिसायकल झालं नसतं. सो फॉर एनी इकॉनॉमी the importance of the circular economy will be there, or the scrap economy, or we say recycling economy will be there. So I linked the forest with the 3R: reuse, recycle and reuse, right? So और ये कहा, मतलब यहाँ इसका प्रिपरेशन तो नहीं हो सकता, मतलब मैंने तो नहीं किया था. So that way at that point you have to generate the points, and when it comes to the topics I used to write 1 to 10 number, 1 to 15 almost, and the 15 paragraphs, like what will be the theme of the paragraph, and I used to just write the ideas and I used to reflect the same in my mains paper, in my essay paper, the ideas of the same, like forest economy, how to link the both, how to link the both. Hmm? Yes, essay, for the practice of the essay, what you can do is like you can write any test series, or you can write any PYQ, and you can judge it, and after like writing 6 7 essays, now your essay writing will be refined, very refined. Hmm? Language paper, yes. For me, the compulsory language was Marathi firstly, and second English, of course. So I wrote the one PYQ of both the same, and I shown them to any teacher of, like, if you are studying in the college, you can click the PDF, like make the PDF of it, and you can send to Marathi teacher. Or for those who have having Hindi as a compulsory language, you can send the copy of the same to your Hindi teacher, or whatever, Kannada or any other language. That way you can get to know, like, and just you have to scale yourself, like give the minimum mark to your paper, and you should think that are you getting like 80 plus marks in your entire paper, then you will be confident, like yes, I am clearing the same. तो कंपल्सरी पेपर आई डिडंट, मतलब मैंने ऐसा स्पेशल प्रिपेयर नहीं किया था. जब मेरा मेरा प्रीलिम्स हो गया था, तब मैंने एक कंपल्सरी पेपर डिफाइंड टाइम में लिखा था, और मैंने मेरे एक टीचर को जो मराठी सिखाते हैं उनको भेजा था. दे सेड इट्स गुड, काइंड ऑफ गुड एसे एंड एवरीथिंग. तो आई जस्ट रिलाई ऑन द सेम. एंड जब जीएस 1 2 3 4 के जो पेपर होते हैं वो एक वीकेंड पे होते हैं, और अनदर वीकेंड पे आपके कंपल्सरी लैंग्वेज और ऑप्शनल के पेपर होते हैं. तो बीच में जो 4 5 दिन का पीरियड है, उसमें आई डिडंट प्रिपेयर्ड एनीथिंग अबाउट कंपल्सरी पेपर्स. इवन बिफोर गोइंग एंटरिंग into the hall and writing Marathi or English paper, I used to read the anthropology only, because for me the anthropology paper was very important. For Marathi I didn't prepare anything. For English the same, I didn't prepare anything. Just went there and just wrote the paper. That's it. एक पेपर लिखना है, पेपर टाइम पे कवर होता है, तो फिर इट्स नो प्रॉब्लम है. टाइम पे तो कवर हो ही जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि क्या है, जीएस के पेपर्स इतने लेंदी होते हैं, तो हाथ आपका हैबिचुएटेड हो जाता है टू राइट द फास्ट. डन. एनीथिंग एल्स फॉर द मेंस? Newspaper. For me, when I started the preparation during COVID times, I used to read the online summaries of the various YouTube channels. That was good for me, half hour daily, and that was very sufficient for me. And they used to explain the same. क्योंकि आप अगर starting phase में हो तो आपको डिटेल में नहीं पता चलता कि क्या है न्यूज़पेपर में. तो फिर you just read it and just crux you do not get. So for me, I used to read the newspaper summaries on from the YouTube channels. But in latter phases, I started reading newspapers when I got to know, like, yes, these are the things which are happening. So it's very essential for you to pick up the stage, like when to start the newspaper or something like that, and depend on you. You can take the decision, but at least keep in the touch of what is going around. न्यूज़पेपर समरीज में भी हो जाता है. बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि एडिटोरियल रीड करना ज़रूरी है फॉर द सीसैट, बट आई हैवंट फाउंड एनी लॉजिक बिटवीन द बोथ. So it's up to you that whether you want to read it or not. But for me, editorial worked for the interview. So for the interview stage, I used to read 3 papers. Right now, even I am
reading three newspaper, one local language paper, Marathi, Lok Satta or something like that you can read. Hindi mein either Express or Hindu, whatever is comfortable to you, and one Financial Times or economy related paper. That too in interview, not now. If now you are reading three papers, then your half of the day will be gone. So it's not for you as of now. As of now, you can keep in touch what is going around. You can either read newspaper summaries through various online that videos, or you can read the paper. But सब आपको हाफ आवर में निपटाना है, उससे ज्यादा टाइम मत दो. और जब आपकी प्रीलिम्स पास आएगी तो जस्ट कीप इन द टच की व्हाट इज गोइंग अराउंड, बट डू नॉट डाइव डीप. बहुत सारे बच्चे 3 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उससे नोट्स निकालते हैं, हाईलाइट करते हैं, पूरा पेपर पीला पीला करते हैं हाईलाइट से, उस पे सिर्फ नोट्स बनाना, उस पे सिर्फ माइक्रो नोट्स बनाना. दैट इज समथिंग आई डू नॉट अधेयर विद, frankly speaking. Those who are doing, they are comfortable, they should do it, depend on their own wish, but I do not use to do it, because that's too risky. Spending 3 hours just for the paper and productivity, reducing productivity, that too, उसमें से क्या आएगा you even don't know, right? So do the things which are productive, simple. Prelims में जो करंट आता है, that वो न्यूज़पेपर मैंने 6 महीने पहले पढ़ी थी और वो आ गई, तो ऐसा तो नहीं होगा. रिवीजन इज मस्ट, सो दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम current affairs magazine or something, which is whatever the comfortable magazines for you, you can read the same. But उसमें notes निकालना and all that things, I do not, मैंने कभी नहीं की थी. For the prelims as well as I didn't make the notes. For ancient India, I made the notes for the main key takeaways. But apart from ancient India, medieval India, I didn't make any notes for the prelims as such. For mains, notes are compulsory. That this was my keyword and everything. Notes, like entire GS3, GS4 was in there. Essay was for that sake. And for the GS2, I made these notes, micro notes, so that I can read the same in the 2 hours between GS1 paper and GS2 paper in the afternoon period. That actually works. सिलेबस के टॉपिक्स साथ में रखने हैं और पीवाईक्यू साथ में रखने हैं, और उसमें से आपको थीम्स आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी थीम्स इस सिलेबस से रिलेटेड रिपीट होती है. जैसे मैंने बताया कि इन GS2 पेपर one year they'll ask SHG question, next year NGO, then SHG NGO. So some themes oftenly get repeated. That way it can help you. I think in 2018 or 19 the question was on the overground workers, which was very offbeat question. But if you know underground operations, अंडरग्राउंड मतलब क्या, वो जो स्पाइस एंड एवरीथिंग वाला पार्ट, अंडरग्राउंड ऑपरेशंस होती है, तो अगर वो क्लिक हो गया तो इन द पेपर यू कैन गेट टू नो ओवरग्राउंड वर्कर मतलब उससे अपोजिट होगा, मतलब जो सिविलियंस आसपास घूमते हैं वही इंटेलिजेंस की ऑपरेशंस करते हैं वाला. तो एनालाइजिंग पीवाईक्यू इज इंपॉर्टेंट, दैट विल रिड्यूस योर शॉक्स इन द पेपर. लाइक अचानक से ये कहाँ से टपक गया, ऐसा ऐसा वाला फीलिंग नहीं आएगा. यू विल बी हैबिचुएटेड, लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर. आई जस्ट हैव टू कंप्लीट माय पेपर. I just have to complete my papers. Huh? Yes, I'll be coming to the optional. Yes. Huh. Huh. I think when you qualify, for the economy, Mrunal sir's notes are not that, but some part of that will be beneficial. For example, for the digital payments or something like that, they have the dedicated page for that, so you can use it. But for the economy, it's very vague to prepare for the GS3. Just keep in touch with the basic points like inflation, how to control, what are the how to maintain liquidation, what are the RBI is doing for the same. ऐसे 5-6 क्वेश्चंस करो, और बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे में इम्पोर्टेंट न्यूज है दैट यू शुड प्रिपेयर. फॉर एग्जांपल गति शक्ति, सागरमाला, भारतमाला, ये 2019 में शायद से आए थे, 18 या 19 में क्वेश्चन. सो वो डायरेक्टली बजट से लिए हुए थे. नो, देयर इज नो स्टैंडर्ड रिसोर्स फॉर मेंस, क्योंकि स्टैंडर्ड रिसोर्स करने जाओगे तो 15-20 दिन उसमें से ही चले जाएंगे. सो दैट वे फॉर द इकोनॉमी मेंस, करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है दैट यू कैन प्रिपेयर, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थिंग्स और समथिंग लाइक दैट. नो, आई हैवंट read at all. For the interview, I just pick the themes of the Yojana Kurukshetra and I just use them in my interview preparation. Throughout my preparation, I haven't at all used. अगर एक थीम है एग्रीकल्चर की, तो ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर की एक डिफरेंट योजना है, तो इंडेक्स यू कैन रीड. एंड अगर आपको सिलेबस पॉइंट में कंटेंट कम पड़ रहा है तो दैट वे योजना यू कैन यूज इट on on the government website. The योजना's PDFs are there, right? उसमें उन्होंने थीम्स भी मेंशन किए कि ये योजना रूरल डेवलपमेंट के बारे में है, ये कुरुक्षेत्र डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में है.
तो अगर सिलेबस के पॉइंट में आपको एक टॉपिक है और उसमें आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो वही योजना डाउनलोड कीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट नोट कीजिए और साइड पे रख दीजिए। ओके। मंथली में एक कर सकते हो कि आधा मैगज़ीन कुछ काम का नहीं होता। तो पहले ही अगर आप रीड कर रहे हो तो आधा तो स्क्रैच ही करना पड़ता है वैसे तो। सो आई यूज्ड टू डू दैट सो दैट अगेन आई डू नॉट हैव टू यूज़ एंड द रिफाइंड मटीरियल आई यूज्ड टू गेट, यूज्ड टू रिवाइज़ इट मल्टीपल टाइम्स। मतलब अ हर दिन प्रीलिम्स के जो आपके 6 महीने पे लाइक जनवरी टू मे। सो फॉर दैट पीरियड इफ यू आर गेटिंग लाइक हाफ आवर जस्ट टू रीड द करंट अफेयर्स मैगज़ीन, देन जस्ट लाइक एक मैगज़ीन कवर करने में आपको ऑलमोस्ट 5-6 दिन लग जाएँगे। तो फिर सारे मैगज़ीन्स होने के बाद अगेन वो साइकिल रिपीट करना है, अगेन साइकिल, ऐसा 3 बार अगर रीडिंग हुआ है तो देन इट्स सफिशिएंट फॉर द करंट अफेयर्स मटीरियल टू फॉर द रिवीजन। डिपेंड ऑन यू कि हाउ यू लाइक इट। some people for some people it works, but again current affairs magazine में ये प्रॉब्लम होता है कि half of the material is not that relevant. For example, exactly, हाँ, तो on the revision purpose you can do it. For example, the thing was like IPC reform पे अगर क्वेश्चन आ गया या IPC reform अगर बार बार न्यूज में हो, hardly you can get IPC reform question in the prelims, right? It's the mains part. Any new act or new law is there and it's in the debate in the parliament, hardly you get question on that law in the prelim. It's for the means like data protection law or something like that, they are in the news. For the means you have to prepare, not for the prelims. So prelims के क्वेश्चन देखिए तो आपको पता चलेगा कि एनवायरमेंट एंड साइंस वाला करंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, फॉर पॉलिटी करंट इज रेयरली देयर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, राइट? एक दो पार्ट हो गए जैसे कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है वो है, या एंटी डिफेक्शन हो गया, एक दो ऐसे करंट अफेयर्स की टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के, दैट यू कैन रीड, बट फोकस ऑन द साइंस रिलेटेड करंट एंड एनवायरमेंट रिलेटेड करंट, दैट यू कैन डू फ्रॉम द पीटी 365 एंड अदर मैगजीन्स। यस, that too specific. Geography NCRT, history NCRT are extremely important, but when it comes to the economy, उसमें जीडीपी का कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट दिया है कि वो लाइक इट्स आउट ऑफ द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स टू रीड इट. सो बेसिकली सिलेक्टिवली यू शुड डू इट. पॉलिटी एनसीईआरटी फॉर द just like getting what is polity, how it works, for that it's good, but after that Lakshmikant is sufficient. But for the geography, NCERT is the only source to prepare, along with the GC Leong part 2. If you are planning for the 2024 attempt, start with the means preparation right now. Prepare it fully by December, and after December you can, like after January you can do with dedicated prelim, like writing more, like solving mock test and other things, right? Why means is like GS2 or GS3, they have very limited syllabus. At the same time you can get a material on that, like I said about GS2 and 3 introduction, standard introduction, 4 points 5, against point 5, like pro points 5, cons point 5, या पॉजिटिव पॉइंट्स 5, नेगेटिव पॉइंट्स 5, वे फॉरवर्ड पॉइंट 5, या उसमें ही कमिटी के रिकमेंडेशन, वैल्यू एडिशन, एवरीथिंग, देन द कंक्लूजन पार्ट. For these micro notes I just made it after prelims, when I got to know that I'll be qualifying prelims and I'll be writing mains. Yes, it's possible, no issues. Right now you are in the preparatory stage, do not make notes, क्योंकि आप इतने बड़े 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 नोट्स बनाएंगे कि आप फिर से वो खुद ही रीड नहीं कर पाएंगे. सो आपके बुक में ही आप ऐसे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अगर आपको वैल्यू एडिशन दिखा है, या वैल्यू एडिशन की एक डिफरेंट नोटबुक मेंटेन करना, उसमें कुछ रबिश थिंग नहीं लिखना है, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टेकअवेज लिखना है, दैट्स इट, यू कैन डू. और फॉर ऐसे इथिक्स वाला यू कैन मेंटेन अ नोटबुक वेर इन यू विल बी एडिंग 3 to 4 एग्जाम्पल्स ईच डे, stories from the leaders, or the stories from the lives of the history leaders or something like that. Okay, so that way you can maintain. But for the notes I feel for the prelims notes are not that important. What you can do is like for the history you can make only for the ancient medieval, because it's a vast syllabus, limited point will be there, so that you can do. Even for the means diagram related things you can pin it down as of now, but use it selectively or do it selectively, that और एक सोचो कि ये मैं यूज करूंगा क्या फ्यूचर में, यही देख के सोचो और आप नोट्स आपके हिसाब से बनाना. दैट एनी अदर थिंग. I prepared from my hometown during COVID time, so
देयर इज नो एक्यूरेट प्लेस फॉर द यूपीएससी, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका स्टडी कहाँ होता है। घर पे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में न्यूज़पेपर नहीं आता है, कोई भी इंग्लिश स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर नहीं आता है, हमारे घर के आसपास नहीं आता। सो आई रिलाइड ऑन द ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स ओनली व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट। सेम फॉर द नोट्स और द बुक्स, Amazon से you can order the book and you can read it. So depend. There is no accurate place for the study. Most of the people go for the Delhi, but it's up to you. For interview, I stayed 1 month in Delhi just for the mock interviews. Exactly. Hmm. Other resources, you can refer it like on the Xerox center. Various notes will be there. You can refer it, and whatever will be you will be finding it's good. You can like you can use it, and you can even watch the topper stock or something like that on the YouTube, and you can. Or as I said, for the validation, you can use Yojana Kurukshetra selectively, not everything. For example, there will be Yojana Kurukshetra on the rural development, but hardly there is any topic on the rural development is there in the GS 1, 2, 3, 4. There is agriculture related thing, so that part you only you can pick up. स्टार्टअप रिलेटेड एक योजना है, वो मैंने मेरे इंटरव्यू में प्रिपेयर यूज किया था, पर मेंस में स्टार्टअप वाले योजना का दैट वे इट्स नॉट दैट यूजफुल बिकॉज सिलेबस के पॉइंट में स्टार्टअप इज नॉट मेंशन। इफ इट्स इन करंट अफेयर्स फ्रीक्वेंटली देन इट्स गुड। Yes, for me, they were asked, like I am mechanical engineer, so they asked me what was your last year project and everything. So just basic wala thing, not deep, but when you'll like when you'll write the means, you'll have adequate time till your interview. So that in the 10-15 days you can brush up the knowledge. They do not need that you should know entire deep things in your graduation. Just if you know the periphery, then it's even okay. They'll ask you if you are like BA history, no, for example, you are like political science wala graduate, then how you can use your graduation in the administration. If you are engineer, IT engineer, then how you can use IT in the administration. So that way, they can use like if your optional is different. For example, for me, anthropology, they asked me how you can use anthropology in your administration. That way, you can get the questions. I'll talk about interview. We'll take the question answer session after the this, right? We'll take this after the entire thing. So now essay ethics we talked. Now I'll come to the personality test. So how it is there, like what kind of nature of questions you can get. So when it comes to personality test, फर्स्टली इट्स अ पर्सनालिटी नॉट इंटरव्यू है, ये सब लोग बोलेंगे, पर मुझे ये इंटरव्यू देने के बाद पता चला कि व्हाट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। बिकॉज लास्ट ईयर आई गॉट वन ऑफ द लोएस्ट स्कोर इन द इंटरव्यू, लाइक इट वाज अराउंड 143 last year interview 2021, and this year interview I got 195 in interview. So personality ऐसी एक साल में चेंज होती है क्या? नहीं। If you ask me, no. But what worked for me is like last year मैंने answers दिए थे, but that were like GS type of answers. Like these are the things, this is the fact, 1, 2, 3 points, wala things. But this year, what I did is value based answers. For example, this is personality test. This is not interview. So what is the difference between interview and personality test? So it's the thing like they are judging your personality, राइट? और वो जो आधे घंटे में आपको जो कुछ 20-25 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें वो आपकी जो ट्रेट्स है पर्सनालिटी के, दैट वो डिग आउट नहीं करेंगे, तो वो आपको खुद से आपके आंसर्स में से पोर्ट्रे करने होंगे। For example, if you get the case study on the corruption, like this is happening in the system, so how you will do it? So rather than how to be like what are the institutional structures to avoid the corruption and everything, you should tell the how you will react. What are your values, your response, your own response? Like corruption in any sense is not tolerable at all. ये अगर फर्स्ट स्टेटमेंट होगा तो क्लियर हो जाएगा कि आपका व्यू क्या है उसके बारे में, लाइक यू आर अगेंस्ट करप्शन। सो दैट वे इफ दे आर जजिंग योर पर्सनालिटी टाइप्स, देन यू शुड बी क्लियर कट, लाइक दिस इज माय आइडियोलॉजी, दिस इज माय आइडियल्स, दिस आर माय वैल्यूज और समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया कि मुझे उन्होंने पूछा टेल मी द थिंग्स व्हिच आर व्हिच यू आर प्राउड दैट यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र।
So I told them, like, being a Marathi, Indian identity comes first, then our sub-regional identity. Secondly, we are open to other culture, we are cosmopolitan, we are like open to other ideas that way. Even मैंने बताया there is mini world in India, like all kind of forest type, all kind of climatic types, everything is there in India. In Maharashtra, we proudly say that there is mini India in Maharashtra. That way the value based answer you can give. There is a scope of innovation too. For example, I got the and the integrity testing question. I got a question like, you are a mechanical engineer and you are a good mechanical engineer, then why you switch to the anthropology when it comes to the option. क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अच्छे क्वेश्चंस मतलब अच्छे आंसर्स दिए थे वहाँ, तो उन्होंने बोला कि यू आर गुड मैकेनिकल इंजीनियर, देन व्हाई यू आर यू शिफ्टिंग टू द एंथ्रोपोलॉजी. आई जस्ट फ्रैंकली टोल्ड देम, mechanical engineering is a 4-year vast syllabus and I wanted to make my preparation joyful. At the same time, when I saw the syllabus of all the options, I found anthropology is genuinely interesting and it can actually help me in my administration. So just simple thing, nothing like that. मुझे बचपन से इसकी ये थी इंटरेस्ट था, मैं ट्राइब्स में खेला कूदा था तो मुझे वो ट्राइबल्स के बारे में नहीं. Frankly speaking, the answer was like, it is a like mechanical engineering is a 4-year vast syllabus. I wanted to make my preparation joyful. At the same time, I found it very interesting and that can actually help me in the administration. उसके बाद का क्वेश्चन था, how you can use the anthropology in the administration. So I just told that the tribal studies are there in the anthropology, and that can actually that empathized me towards all the vulnerable sections of the society. At the same time, it talks about cultural relativism. There is one concept of cultural relativism in the anthropology. We talks about that we should see other cultures from their prism, their point of view, not our point of view. For example, I am urban, then I'll see like, oh, rural people are like that, this, and I'll have the prejudices of the same. But if I see other cultures from their point of view, then it's a cultural relativism. So I told them like, this will help me in my administration. That was the first point about general administration. Second point was of the revenue administration, because my second point was about of the foreign policies or the diplomacy, that anthropology talks about field work. Fieldwork is something anthropologists go in the society, live in that society, and observes what is going on in the society and get a takeaways from that society. So I told that Sham Saran have once said like, Chinese people know how India thinks about China, but Indian people don't know how Chinese people think about us. Are you getting statement? Chinese people know how Indian people think about China, but Indian people don't know how Chinese people think about us. So that way it's very important for us to for it's very important for the diplomats or the whatever the foreign whatever the external affairs ministry staff posted outside India in our embassies, consulate. It's very important to know how that society functions, how that society think about India, India's culture. Because when we'll dominate in terms of economy, it's very important for us to export our soft culture, right? So for that we should get to know how other people are thinking about us. So that way anthropology can help in the foreign policy. Third way, I told about revenue administration, that economic survey 2019-20 talks about like evading tax or not paying tax is considered as a supreme. Are you getting? Like, evading tax is considered as a supreme and not as a thing of pride that I paid this much tax to the government. People are always like skeptical to pay the taxes to the government. Rather than if we made the thing supreme, like paying tax is the highest thing, then people will be more than happy to pay the taxes to the government. For example, economic survey talks about like naming the roads of after the highest taxpayers. Like we can get the money from the taxpayers in the rural areas, and at the same time we can name the that roads after the name of the highest taxpayers. That way we can, like, government can recognize those who are paying high taxes, so that we can make the attitudinal change. In anthropology there is a concept of psychological anthropology or the common collective consciousness or something like that. That way government policies or different policies can make the attitudinal change in the people to think about that policy in a different way, right? ये ऐसे मैंने 3 पॉइंट्स बहुत कंसाइज करके इंटरव्यू में बताए थे. सो दैट वे सम काइंड ऑफ थिंग यू कैन ऑलरेडी प्रिपेयर बैक ऑफ माइंड, like
thinking, brainstorming or something like that. I know you are in the preparatory stage and it's very difficult for you now to think about that, like how I can produce such answers. But I was there one day that I used to sit there, I used to read such kind of toppers talk or something like that. But in the latter phases of your preparation, after 1 year, you will be able to do such thinking. But just make a habit to observe things. Whatever there is in the syllabus now, it's all round. मतलब everything under the sun you can say. So जो syllabus में है ना, वो आसपास देखना start कर दो, अपनी skills बढ़ाओ. Whatever the skills are there which are required for the for being a civil servant, you should inculcate that, you should recollect that, like public speaking. लाइक अगर आप गाँव से हो और अगर आपको बैरियर है कि आप लोगों से कैसे बोले, लाइक जब आप अर्बन एरियाज में शिफ्ट होते हो समथिंग लाइक दैट, जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग. इफ यू हैव द बैगेज इन माइंड लाइक हाउ आई कैन speak English, then you just talk English with all your peers or friend group to improve your skills. That will help you in the personality test, definitely. For that, you should reflect upon what are your values. I think you should be knowing what are your values. Sometimes we are compassionate, we are empathetic, but we even don't know that we are like that and we take it as a negative, like I am emotional. It's not a negative thing. If you are inculcating emotional intelligence, that's one of the highest quality a person can have, right? So you should know what are your values, what are your strengths, what are your weaknesses. For example, ऐसा बहुत बार होता है कि हम हमारे वीकनेस के बारे में इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि हम वीकनेस को एलिवेट करते हैं और स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाती है और वी आर बिकम एवरेज, वी आर बिकमिंग एवरेज, right? So whatever weaknesses are there, you should improve upon, no doubt about that. But at the same time, you should retain your strengths, you should make them strong. So for the personality, it's very important. It's not a 1 day or 3 month program or crash course like that, like you are entering the crash course and you are getting through the personality, something like that. You should be in that process along with your preparation. You should think like that. Okay, right. I'll come to the optional. Same goes for me. Like mechanical engineering is a vast subject, and वो numericals में कभी कभी अगर यहाँ हुआ तो it actually cost you a lot when it in terms of marks. So I had to choose another optional. At the same time, I found my optional like anthropology is really interesting. It's actually really contributing to the administration. Like tribal studies are there, Indian society studies are there. That actually fascinated me to the for studying anthropology. I just did that. Mostly the self study was there. A lot of notes are there of the toppers on the telegram, like Mandar Patki sir's notes or um, नारायण सर इज देयर, उनके नोट्स है और अपाला मिश्रा मैडम के नोट्स है, सो दैट यू कैन यूज इट, रेफर इट. और any other classes you, if you want, you can join or something like that, which is better or something. So that way you can that way it can work. At the same time, optional में I feel it's very important for you to have interest. Why? Because if you can compare your optional syllabus with the IGNOU's MA syllabus, both are equal almost. Like MA level is there, Master of Arts wala level is there when it comes to the UPSC optional subject syllabus. So हाँ इग्नो के notes भी है sociology और anthropology, that you can use. So अगर आप कॉलेज में हो और आपने कभी रिसर्च पेपर देखे होंगे तो बहुत सारे थिंकर्स या बहुत सारे रिसर्चर्स यू हैव टू कोट, एंड द रिसर्च पेपर और द थीसिस इज लाइक very elaborate, very to the point, very scientific, right? So optional subject is more like a research oriented, especially sociology और anthropology. कि उसमें आपको बहुत सारे thinkers कोट करने पड़ते हैं, बहुत सारी उनकी बुक्स कोई है तो इस बुक में उन्होंने ये रेफरेंस दिया, उसमें काउंटर ये है, और लाइक दैट वे यू सिंथेसाइज योर आंसर्स. एंड मेंस में ऐसा नहीं होता, लाइक जीएस 1 2 3 4 में ऐसा नहीं होता, आपको थिंकर्स रिसर्चर्स की कोई जरूरत नहीं होती, डेटा फैक्ट्स आर सफिशिएंट. सो दैट वे there is little bit different strategy when it comes to the optional and GS. So for that, I'll suggest you should go through the proper copies of the optional of your respective optional. At the same time, different GS copy, you'll get to know like there is lot of difference between GS preparation and optional preparation. So this concludes all the stages, prelims, mains, and interview stages of whatever I wanted to deliver you for your preparation. Now we'll open for the question answer session. For me, something worked is like integrated वाला thing, क्योंकि
अगर दिन में आप से 10 घंटा 12 घंटा जो कुछ आपका टाइमिंग है पढ़ने का, वो आप कर रहे हैं, तो पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट लिया तो बहुत बोर हो जाता है। तो फिर आई यूज्ड टू अलोकेट 5 हॉर्स फॉर दिस, 5 हॉर्स फॉर दैट सब्जेक्ट। सेम गोज़ फॉर लाइक जीएस 2 में आप मॉर्निंग कर सकते हैं, जीएस 3 आप इवनिंग कर सकते हैं, या 3 सब्जेक्ट्स कर सकते हैं एक दिन में, और वो 15 डेज़ के लिए पैरेलल रख सकते हैं। इफ यू आर वाचिंग द लेक्चर्स of like you have all the downloaded lectures of any other thing, and you are like very difficulty for switching the lectures, and if you are say 90 lectures and you have to cover it, for me I used to like watch the entire lectures throughout the day, अगर वो सिर्फ वॉचिंग लेक्चर्स का पार्ट हो, सो दैट आई कैन कंप्लीट इट इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। बट रीडिंग का पार्ट हो तो आई यूज्ड टू डिवाइड इट लाइक 3 स्लॉट्स और 2 स्लॉट्स, सो दैट आई शुड नॉट गेट बोर। और एक दिन में अगर बुक रीडिंग करने के लिए लिया तो एक प्रॉब्लम हो जाती है कि वी आर जस्ट रीडिंग एंड एक एक पेज पे ही 1 घंटा नज़र है और दिमाग कुछ अदर जगह रन हो रहा है, तो ऐसा भी होता है। सो दैट वे you can divide your slots in different times, and you can set a timetable like like different in 8 days I'll complete Lakshmikant, in 11 days I'll complete the economy notes or something like that, right? Whatever is the efficient way for you, now you should do that. ट्राई एंड एरर, व्हाट वर्क्स फॉर यू। आई थिंक कुछ कुछ बच्चों के लिए बहुत जल्दी उठना वर्क करता है। फॉर एग्जांपल इन कोविड टाइम्स आई यूज्ड टू वेक अप वेरी अर्ली, लाइक on the 5 or something like that. I used to start studying. That used to work for me. Everything, everywhere silence was there, nobody used to come at each other's home, so that used to work for me. For someone, they in the morning they get sleep, so they study late night. So for someone it might work. So you should like see the productivity of yours in different timings. You can any other thing. मराठीत प्रश्न विचारू शकता, काही प्रॉब्लेम नाहीये कुठच्याही भाषेत. मी फक्त ते ऑनलाईन लेक्चर सगळीकडे ब्रॉडकास्ट होणार आहे म्हणून मी हिंदीत बोलत होतो. तुम्ही कुठच्याही भाषेत विचारू शकता. Very little, but in personality test it can actually help you. In GS, I think the PSIR option is only there which helps you in GS2. But do not think in that way that will it help me in that thing. If you are genuine interest in that, at the same time, if it's fetching marks, if you have ready material, then you should choose the option. Zoology optional is getting good marks, PSIR is getting good marks, Anthro is getting good marks. But it's up to you that how you are writing the paper. For the like, if you have read the basic economy and you know the what are basic concepts in the economy, then you can actually, as a out of interest, you can get in touch with the finance related newspaper that can actually help you in prelims as well, indirectly. क्योंकि क्या होता है फाइनेंस में जो जो कुछ लाइक न्यूज में आता है ना, एफडीआई बढ़ गया, एफडीआई कम कर दिया, ये हो गया वो हो गया, दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू इन प्रीलिम्स, क्योंकि seeing the unpredictability of prelims, it's very important for you to have a current touch, but not you should mug up the current related. uh, till last year what used to happen, like people used to revise multiple times current affairs notes, and they used to get what is there, and it used to work. But right now the unpredictability is like that. You should know everything of like something of everything, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो तो you can do a guesswork. uh, Underrated but difficult question to answer. I'll say कि there is a huge role of self study. कोई भी आपको पूरा का पूरा नहीं दे सकता. There is lot of information, over information available, whether it's on internet or telegram, but you should choose it wisely. What works for you, what do not works for you. For example, you are here to become a collector and not a material collector. Are you getting? Collector, not a material collector. People go in the Xerox centers and get lot of materials and just dump it in the room. Do not read it. So that doesn't work, right? So एक ही मटेरियल लेना है, वो अच्छे से रिवाइज करना है, दैट वर्क्स. बट व्हेन इट कम्स टू द कोचिंग, आई विल से यू कैन गो टू द कोचिंग, because that can guide you like how to study, like what are the subjects or something like that. Because when you are in the starting phases of the preparation, it's very difficult to get you a path, like how to do it or something like that. But at the same time, it's not a 100% essential thing that you should do it, and if you are not doing it, you will not be able to sail through. But at the same time, one criteria I want to say while choosing classes or something like that is the teachers.
what is the quality of the teachers, not the toppers. For one topper it may work, for one topper quality of teachers you just see, and if you are liking the same you can join. For example, online classes can work. Good classes are there in Delhi, that might not be available in Pune, so you can join online classes. You can watch the videos or something like that, make notes, and you'll be fine. For anthropology, they say it's a easy optional, but for me it took 4 months to cover. So each optional need different time frame. So according to you, it depends. But if you are like doing study more than 10 hours a day na, at any cost, then it becomes very easy to you for you to do the study. Like genuinely do 10 hours plus study. So कभी भी वो हो जाएगा ऐसे मतलब स्टडी का. You should be very frank with whatever you are doing. You should be putting your good kind of hard work plus smart work blend. Your smart work क्यों वैल्यूएडिशन के लिए, हार्ड वर्क क्यों अमाउंट ऑफ आवर्स के लिए, लाइक एक जगह बैठना पढ़ना वो वाला. इफ यू आर पुटिंग दैट देन यू शुड रिलाई ऑन योर ओन हार्ड वर्क ऑन समथिंग लाइक दैट, बिकॉज उसके बाद टाइम फ्रेम तो चलता ही रहेगा. अगर मेंस के जीएस के सब्जेक्ट्स के तो वो हो जाएंगे, ऑप्शनल हो जाएगा, बाद में प्रीलिम्स आएगा, वैसा वाला टाइम. पहिल्यांदा कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग फार महत्वाची आहे याच्यात ऑप्शनल मध्ये. ते कळलं की नंतर यू कॅन. देर आर लॉट ऑफ नोट्स पीपल यूज इट डायरेक्टली एज वेल, सो व्हॉट वर्क्स फॉर देम मे बी. First PYQ, first syllabus copy, and then notes, and then material. Because there is lot of material on the internet in the name of GS2 में ये है, GS3 में ये है, or something like that. But actually what works is like syllabus point, and GS2 में it's different to difficult to get exact things. But in GS3 I'll say जब आप स्टार्ट करोगे ना तब GS3 से स्टार्ट करना, क्योंकि उसमें स्पेशली इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर वाले जो पॉइंट है उसमें डायरेक्टली आपको मिलता है कि ये पॉइंट है, इसमें ये नोट्स है, ये पॉइंट है, इसमें ये कंटेंट है, लाइकवाइज. मी लिहिले नव्हते, पण what I used to do is like PYQ में से content, like what is the question, demand of the question, and how the question can be there in the next means. That I used to do. I haven't written the single questions as such. I directly got a test series. I just used to write the test series only directly. एंड फर्स्ट थिंग आई जस्ट टोल्ड कि जब पहले 20 क्वेश्चंस थे उसमें से 14 या 15 ही क्वेश्चंस कवर होते थे, नेक्स्ट टाइम मैंने 16 किए, 17 किए, उसमें से ऐसे 20 किए थे. क्योंकि पीवाईक्यू में आप अगर लिखने जाओगे तो आपके पास बहुत टाइम है, आधे घंटे में एक क्वेश्चन लिख सकते हो वैसे तो, बट दैट डजंट वर्क्स इन एक्चुअल मेंस पेपर, राइट. एट द एक्चुअल मेंस पेपर यू डू नॉट गेट टाइम एट ऑल टू थिंक. क्वेश्चन दिखा आंसर लिखा, क्वेश्चन दिखा आंसर लिखा, दैट वे इट वर्क्स. If you are time and like you if you have done some basic preparation, then you can solve the PYQ papers, full length paper. I'm saying like GS1 का paper लिया पूरा 3 hours में cover कर दिया, so that way you can do. But after prelims it's good to go for the actual test series from any standard classes. असं काही नाहीये की हिस्ट्रीत करंट नाहीये म्हणून मार्क म्हणजे व्हॅल्युएशनला स्कोप नाहीये. हिस्ट्रीला त्याची डिफरेंट डिमांड है. म्हणजे हिस्ट्री के लिए उसकी एक अलग ही डिमांड होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी डायनेस्टी पे क्वेश्चन आ गया, लाइक वो जो फॉर एग्जांपल चोलाज एक्सपांशन इन साउथ ईस्ट एशिया, तो उसकी पिक्यूलियर जो डिटेल्स है ना कि व्हाट टेक्नोलॉजी दे एक्चुअली यूज्ड इन द शिप दैट हेल्प टू ओनली चोलाज एंड नॉट अदर एम्पायर्स. दैट वे जो पिक्यूलर पॉइंट्स होते हैं ना हिस्ट्री में, दैट यू कैन यूज इट. सो ईच ऑप्शनल हैव द डिफरेंट गेम. So एंथ्रोपोलॉजी, फॉर एंथ्रोपोलॉजी देयर इज नो करंट एक्सेस ना, क्योंकि एक्सकेवेशन हो गया, अभी फिर से निएंडरथल नहीं आने वाला. सो देयर इज नो करंट एक्सेस, बट अपकमिंग एक्सकेवेशंस, अपकमिंग रिसर्च इज देयर, बट वेरी लिटिल पार्ट. और पीएसआईआर एवरीथिंग इज करंट. और पीएसआईआर दे यूज्ड टू लाइक पीएसआईआर के बच्चों को डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन. और एंथ्रोपोलॉजी द चिल इज देयर, लाइक पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो पढ़ा, वैसा वाला थिंग इज देयर. सोशियोलॉजी
ती प्रत्येकाला जशी वर्क होते तशी. आता इथे म्हणजे इफ आय एम टेलिंग द एक्स स्ट्रॅटेजी ऑफ रिव्हिजन दॅट दॅट माइट नॉट वर्क फॉर यू बिकॉज यू माइट हॅव द वाय स्ट्रॅटेजी ऑफ द रिव्हिजन. बट रिव्हिजन इज absolutely necessary, especially for the prelims. Why? Because prelims paper is very dicey, very unpredictable, and there is nothing like मैंने ये पढ़ा और उसमें से ये क्वेश्चन आया. That way multiple revision की तो at least you can eliminate the ABCD में से part, or you can actually guess like this can be the answer or something like that. The revision is absolutely necessary when it comes to the prelims. मेंस के लिए रिवीजन से ज्यादा टाइम कंप्लीट पेपर कवर हो गया, पॉइंट जनरेट हो गए तो हो जाएगा. मेंस के लिए मैंने रिवीजन ज्यादा नहीं की थी, क्योंकि क्या है डेटा फैक्ट्स तो रिवीजन करना पड़ता है, पर जो एक्चुअल सिलेबस पॉइंट है वो आपके जब आप क्वेश्चन पेपर लिखते आंसर कॉपी में तो रिफ्लेक्ट हो जाते, तो आपको पता चलता है कि मैंने ये पढ़ा था, आंसर में ना ये क्वालिटी का है. क्वालिटी ऑफ आंसर में से आपको पता चलता है कि मेरी कितनी रिवीजन है. तो मेंस इज बेसिकली वेरी इजी पार्ट. इफ यू आर कवरिंग द पेपर देन you can be sure like I'll get an interview call. So for mains paper completion is important, at the same time value addition, content of the answer, that is something very important. Have I answered your question? Anything else for the revision? Okay, there are some people who get good marks with the non-conventional optionals, so you can refer that. But if it's not available, like there are classes in Delhi or something like that that might have some management. Okay, so I feel you are taking the subject that you have keen interest in the same, at the same time you are expert in that subject. Same goes for the commerce and accountancy. Those who are CA, they take the subject and they are very well studied. They are CA syllabus and they are well, I don't have particular information when it comes to management, but PYQ I think that really helps, because for the most of the optionals, the PYQ themes get repeated and they are oftenly linked with the syllabus, provided syllabus is not too vague. PSIR का क्या है कि PSIR में just they have mentioned the things, but when it comes to the current everything under the sun, whatever is happening in the international relations, the question is coming. But for the static subjects like management and something, public administration, yeah, anthro, yeah, sociology, the syllabus is the everything. Any other question? I'll not suggest quitting a job and doing UPSC if you haven't cleared prelims. After clearing prelims, you can apply for the sick leave or the unpaid leave or something like that. But it's very gamble thing. So if you have job, you are lucky. So I'll not I'll not suggest that you should quit the job and do the thing. There are people who have done this, but if you can get 5 to 6 hours, like 5 hours minimum from your along like apart from your job thing, you should go with the job. अगर जॉब ये ज्यादा है लाइक 12 आवर्स डेडिकेट करना पड़ता है, आफ्टर इवन गोइंग टू द होम यू हैव टू अटेंड वेबिनार्स और समथिंग, देन इट्स डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी, और उसमें वो फिर से ट्रैप में फंस जाते हैं. पर अगर यू कैन डिवोट 5 आवर्स एटलीस्ट, देन you can continue your job at the same time your preparation, no issue. And if you are in the field like advocate or the law related thing, you can skip the job, you can get, it's the evergreen market, so you can get a job again. Means most of the people go to the consultancy or something. You do not need to fight the cases in the court, but there are consultancies or the part-time jobs are there. Even if you are good engineer, good bracket engineer, then you can get a job anytime. So medical for that sake, it's a evergreening field. So medical में भी आपको job मिल जाता है अगर आपकी practice मतलब बीच में. So that way you can leave the job, no issues. And through that way it's comfortable for medical students, because yes, I didn't have the biology in my 11th 12th, so I just got difficulty in knowing the body parts and evolution wala things. But if you are from medical background, then it's easy to take anthropology, and you can link your graduation subject to the optional as well, so no need to stretch it. If you ask me, यूपीएससी का प्लान भी एमपीएससी नहीं हो सकता. यूपीएससी का प्लान भी एमपीएससी नहीं हो सकता. दैट वी यूल फॉल इन द ट्रैप अगेन. या बैंकिंग एग्जाम और एसएससी सीजीएल, इट्स नॉट प्लान बी फॉर यूपीएससी. For UPSC, like for example my case, I have attempted MPSC but I haven't cleared prelims itself.
क्लेरिकल एग्जाम हैवंट क्लियर फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ, क्योंकि उसकी डिमांड ही अलग है ना। प्रीलिम्स यूपीएससी की डिमांड ही अलग है, तो और यूपीएससी करना है तो लाइक फुल फ्लेज्ड सिंगल विजन एंड dedication is very important. But after like 2 3 attempts you can think about plan B, and that can be in the business, that can be in another sector like consultancies or something. There are a lot of opportunities, there are endless opportunities to the UPSC students. So do not think about plan B when you are in the starting phase. You can, after 2 3 years you can think about it. And if provided you are not getting a progress in your path. For example, in my first attempt I haven't cleared prelims, in second attempt I cleared prelims, I cleared mains, I reached to the interview, but I haven't get a rank in final list. So I know, I was knowing that I am in the progressive part. In third attempt I just got good rank, that to 76, so I'll get IAS. So that way trajectory was good, so I was on my path. But it is a phase of every like ये हर एक एस्पिरेंट के बारे में होता है कि लाइक वी आर अनएम्प्लॉयड एंड कुछ नहीं है और पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, दैट हैपेंस. सो यू आर गेटिंग पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी ऑफ योर preparation, then you should continue. But after 2 3 years you can like switch to the part time job or something like that. Consultancies are there or something like that. So it's your choice, because UPSC preparation makes you enable that you are having knowledge of everything. Motivation. Okay. Okay. So for consistency, that like timetable is very important, which you like अगर आप घर पे हो तो घर पे अच्छा खाना होता है, तो फिर वो आपको मोटिवेट करता है, लाइक खाने से पहले क्या, खाने के बाद क्या. सो वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी इन योर प्रिपरेशन, यू शुड डू दैट. You should take interest in that, because see, one day you will get into the civil service and then you will be happy that there is no logic in that, because life is very different. And when it comes to the aspirant phase, every aspirant feel that when I'll be in the UPSC list, I'll be happy, but doesn't work like that, right? So whatever day you are having, you should enjoy your preparation. That is the crux of everything. If you are getting depressed, you are getting mental anxiety and you are studying, that there is no point in living such life, right? Just for one exam. So you doing the things which you like. For example, in the preparation itself, make such a timetable that you will like it. And do not compare it yourself with others. For example, I am saying like when I was starting my preparation, there were lot of bright students along with me, which I got connected through social media or something like that. And they used to tell like, अरे मैंने ये book पढ़ा, ये book पढ़ा, और वो book ही पढ़ते रह गए अब तक. I used to get actually frustrated that they are reading so much and I am not reading so much. But I just focus on whatever there is which is required for the UPSC. So that way you will get anxiety that other people are reading lot of things. There are lot of bright students from me. For example, I come from rural background. I studied entire thing in Marathi medium. So पहले इंग्लिश बोलने में भी डिफिकल्टी रहती है कि कैसे इंग्लिश कैसे पढ़े, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हाई फाई इंग्लिश बोलते हैं, उनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा है वैसा है. This happens. If you are from urban background, you will feel like okay, आप like मेरे पापा रिक्शा वाले नहीं है तो मैं कैसे यूपीएससी करूँ. हाँ, so for each and every student there is kind of problem in this journey, but just think about that you have capability, that's why you have taken the decision of UPSC. You are better than other aspirants. At the same time, you should devote 2 3 hours of 2 3 years of, you can devote your 2 3 years. Firstly, till 2018, if I was a topper at that time, I would have said 2 years. First year for preparation, second year from examination. But right now prelim has become dicey. So I'll say 2 3 years you can devote to the preparation, and then you can like be very calm, composed, and you should study hard, and at the same time do smart work. And you should be on the path. If you are getting positive trajectory of your work, then you can be in this path. For example, one of my friend, she haven't cleared she cleared first prelims, and after that she failed in 3 prelims. Then in her like fifth attempt she got a post, but her financial background was pretty good. So it depends on you, like how your financial backing is, what are your supports and everything, and you should be pragmatic about the same. And it doesn't like that if you are from like middle class background or poor background, then you should not think at all about UPSC. You can devote like 2 3 years of your preparation. And I feel our parents are very much generous, very much open, that they want us to become a bright
in our career, so they'll definitely help if you can convince them and everything. So depend on yourself how you take the decision. I think everyone face this problem, not only Marathi medium student, even English medium student, because whatever we are writing in our school days, that is very different from the what UPSC. So you can refer my papers. I have uploaded the same on my Telegram channel. They're very simple, just loaded with the facts, data, and Supreme Court. It's the Vasant underscore Dabholkar Telegram channel. So you can. So why I'm saying this, not for the promotion, but just underscore just like I have written very simple papers, just the loaded with the facts, data, and whatever the previous works I have did it. This is Telegram ID. So why I'm saying ki your language actually doesn't matter. I used to write like example keyword example, so that I do not have to think a lot. इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम तब आता है जब आपको नए से थिंक करना पड़ता है। अगर आपने पहले से ही वो कीवर्ड की लिस्ट प्रिपेयर की है, अच्छे से वो इंटरनलाइज किया है, देन एक्चुअली यू कैन राइट at the time of your paper. Keyword is something which work for me at all, a lot. For prelims, I must say, जो आपके standard sources है, hardly 5 books होंगे हर एक subject के. Just stick to that, multiple, revise multiple, and do not think that I am reading this, that's why I'll be getting definitely sure short questions from that, or I have solved the 100 test series, and I have solved 100 mock tests, so I'll be getting definitely questions from that. Do not at all think about that. Paper is unpredictable definitely, but your static knowledge is only something which will save you in your actual paper. क्या होता है, एनसीईआरटी के नोट्स निकाले तो एक इशू है कि आप नोट्स पढ़ेंगे, फिर से वो उसमें बहुत सारा कंटेंट निकल जाता है. बेसिकली इफ यू आर मल्टीपल टाइम्स रिवाइजिंग द एनसीईआरटी, यू विल गेट द बैकग्राउंड ऑफ द थिंग, एवरीथिंग. सो फॉर एनसीईआरटी आई डू नॉट सजेस्ट द नोट मेकिंग, रादर देन यू शुड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम. क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे लगते हैं कि हम जब नोट्स बनाते हैं तब हम उन्हें स्किप कर देते हैं, पर एक्चुअली दैट स्टेटमेंट समटाइम्स इज इम्पोर्टेंट. For that sake, if you are revising it multiple times, then that can help you. Any other thing? Um for the distraction, the internal motivation is thing that actually helps, but along with that, lifestyle is something you can actually relook upon, like what kind of lifestyle you are doing. Like for me, what used to work is like early waking up, uh, having a good healthy diet, or sometimes exercise may work for someone. That way you can maintain a good lifestyle, so that you'll actually have a cheer or the happiness to study for the longer. So you can take a small breaks. There is Pomodoro technique. I think college you have like reading for 55 minutes, 5 minutes chill, or reading for 25 minutes, 5 minutes chill. So that way some kind of techniques is there. Whatever works you can do. But for the distraction, I say no to the distraction. That's it. For example, we have to skip some festivals even if we are liking it, but I think that's for the small phase of the preparation, like 1.5 years. But after that, everything is really good. For example, I used to travel a lot when I used to get time, so that after 1.5 years everything will be fine. Like you get to know that this is the syllabus, this is the study, and you have relatively studied well. So after that you can have your chill time, but 1.5 year you have to struggle a lot. That happens only in first year of the preparation. If it continues after 1 year of preparation, then the problem is there in the preparation. In first year you will get distractions, you will get self doubt that मुझे ये नहीं पता चल रहा है क्या करूँ मैं, या something like that. So but after some kind of preparation you will get habituated to this. Any other thing? I told it, like for me it didn't work. I haven't did answer writing at the first stage. After prelim I started. Like after giving one prelim you can start, like you can, but it depends on individual. Like क्या है कि हाफ आवर में आपके पास बुक है सामने और आप अगर आंसर राइटिंग करते हो, दैट्स ऑफ नो यूज, राइट? rather than answer writing, I would suggest ki write a PYQ paper entire 3 hours, and in 3 hour time, and then you will get to know like what kind of questions are. But for that you should know the answers, right? some कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना. ऐसा नहीं है कि मैं आज मैंने न्यूज पढ़ी और उसका आंसर लिखी. This doesn't work. So for that sake you should cover GS2 GS3, and then you can write the PYQ or something like that. That actually helps. But कंटेंट नहीं है तो आंसर राइटिंग करके क्या फायदा है ना? दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम. कंटेंट प्रिपेयर करो और उसके बाद आंसर राइटिंग करो. Like some websites are there, these are giving current topics, they have substantial matter in them,
Then people start answer writing, they upload it on the websites, and then they it get evaluated. So I think that this works for someone, so you can do it. Anything else? Any serious doubts? नाही. डायरेक्ट तेच 10 वेळा वाचायचं, 5 वेळा वाचायचं बस. दॅट्स सफिशियंट. बिकॉज मेकिंग नोट्स आउट ऑफ लक्ष्मीकांत इज व्हेरी डिफिकल्ट. एव्हरीथिंग इज इम्पॉर्टंट. ईच अँड एव्हरी स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टंट फ्रॉम लक्ष्मीकांत. पुन्हा ते तेच कॉपी होणार, ते मिनी लक्ष्मीकांत होणार. So spectrum मध्ये you can do notes, but rather than making notes, there are a lot of summaries of spectrum book available in the market. You can download it. But after reading 2 times full Lakshmikant, then you can switch to the mini one. Mostly, I in my second attempt, second prelims, I read the summaries of the spectrum, because in first attempt I read 3 times spectrum fully solo. For interview, you need peer group. For mains, even sometimes peer group works. But even if you are solo, it's good. So take life as an adventure. So if you get good peer group, then you should go with it. But if you are not having peer group, then you should not try that I don't have peer group. Same goes vice versa. Be open. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. Sometimes peer group is full of distraction. Sometimes it's actually firm reply. Sometimes so sometimes so be open. Anything else? To on topics which we get maximum points, like I said, like 1 to 15, right? जो pointers हम निकालते हैं, like 15 paragraphs. If you are getting good 15 paragraphs, then you should choose that topic, not the thing like. और उसमें ये दिमाग ही नहीं लड़ाना है कि बाकी के लोग क्या टॉपिक लेंगे, मेरे कॉमन टॉपिक है या डिफरेंट टॉपिक है, इसी डिबेट में नहीं जाना है. आपको जो टॉपिक अच्छा लगे वो ले लीजिए, और उसमें आपको 15 पैराग्राफ अच्छे जनरेट करने, अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा कंक्लूजन आप जहाँ डाल सके. फॉर एग्जाम्पल, इन द कंक्लूजन आई जस्ट हैड द रेडी कंक्लूजन पैरा फॉर माई कंक्लूजन, like the world has seen enough of hatred, wars, bloodsheds, xenophobia. But as a bona fide citizen of this global village, bona fide means give and take. Like we are giving values to the society, society is giving values to us. Bona fide citizen of the global village. It's our moral and ethical responsibility to bridge the differences, to bring out the peace, to spread the love. ये कॉमन है, ये कहाँ भी फिट हो जाता है. हाँ, so ऐसे similar lines you can work upon. Same goes for the Amrit Kal. We are in the first year of the Amrit Kal. So it's our moral and ethical responsibility as a bona fide citizen of the India to spread love, to spread the peace, at the same time following our fundamental duties, following our constitution, like and value-based education through national education policy always works. Sarve Jana Sukhino Santu wala topic. So that way you can internalize those topics, and when you will internalize that, you can generate that the same in the paper. Right? Anything else? Depend on individual to individual. Like for example, if the hobby is helping you in your preparation, you can go ahead like exercise or something like that. But it's something like watching web series, then actually that is detrimental for your preparation. When it comes to the hobbies of the personality test, it's important. There is one Kothari commission, and which talked about values of the civil servant. So you should reflect upon ki your like hobbies are reflecting actually civil servant like qualities or not. Making tattoo is not a hobby for UPSC. I like making tattoos. So some people actually write such some kind of weird hobbies in their DAF, but I think those qualities or those hobbies awards which are reflecting the civil servant like qualities, you should think about that. प्रत्येकात ना काहीतरी व्हॅल्यूज असतात, काहीतरी अचिव्हमेंट्स असतात, आपण त्या बघितलेल्या नसतात ऍक्च्युली. खूप असतात, म्हणजे आपण जेव्हा ब्रेनस्टॉर्म करू ना तेव्हा ते लक्षात येतात. काही काही मुलं अगदी तो ब्लँकच ठेवून येतात ते. मोस्ट ऑफ द पीपल put rarely something, then they get question on the current affairs, because board members do not have much scope to ask you on the DAF related things. So everyone have some kind of things in their childhood, in their like collegehood or something like that, which they can put it in their DAF. So I think we should relook upon. Sometimes we feel it's a childish, but it's a civil servant like quality. Then that you can put, for example, Gram Sabha, attending a Gram Sabha, or like inviting people to the Gram Sabha. It's a good quality if you just have to formulate it in a standard words. If you are from the village background,
If you are from urban background, if you are like attended a something kind of environment protection parade or something like that, you can put it in a good way in your DAF. So everyone have something to put it in the DAF, which can actually explain your background. It can actually explain your personality. For example, for me the sport entry was blank because I haven't I did a plugging means like jogging plus picking up of the litter in my native district wala thing. So I just put it in the DAF, but I didn't play the cricket or football or some kind of sports or the exercise activity, so I haven't mentioned it. It depends on you to intelligently feel the DAF. Like my DAF is was dynamic, and I got a good questions on my DAF. Like on almost 50% questions were on my DAF. IFS. First IS, second IFS, third revenue. IPS was after revenue. Uh, after they actually whatever is the priority district, I think that depends on that district, right? For example, if someone is in the Kerala, then women development is already there. Just need to propagate the, just need to do a good policy implementation. But when someone is from the for the Haryana or for district where women empowerment is not that strong, then depend on that region to anything about preparation. I made it after prelims. You can make it during your optional preparation as well. But there are a lot of notes of toppers. You can directly print it and you can refer it. For the micro notes, you should prepare like जो आपके 5 दिन होंगे ना means के papers में for that. But ऐसा नोट्स के पीछे इतना मत भागो कि नोट्स करने में आपका डिफरेंट टाइम चला जा रहा हो, वो आप फिर से मत मतलब यू विल नॉट रीड इट अगेन, ऐसे मत नोट्स मत बनाओ। लाइक ये इतने ही नोट्स है मेरे पूरे GS 1 2 3 4 के, इतने ही है। इसमें भी आधे पेजेस ब्लैंक है। इट्स ऑल माइक्रो ना, राइट? सो आई हैवंट प्रिपेयर्ड द बिग वाला नोट, सो आई एम नॉट राइट पर्सन टू से दैट। ऑप्शनल यू शुड टेक इट फ्रॉम द, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रॉब्लम होता है कि हमें लगता है कि ये ऑप्शनल मदद करेगा या नहीं करेगा। सो लाइक एक सब्जेक्ट ज्यादा है ऐसा करके पढ़ो। देयर इज, क्योंकि प्रिपरेशन इज एंडलेस फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड समटाइम इट हेल्प, समटाइम इट डजंट हेल्प। फॉर एग्जाम्पल जूलॉजी ऑप्शनल है या एनिमल हस्बेंड्री ऑप्शनल है, उसका कोई लिंक नहीं है, पर बच्चे अच्छे मार्क्स आते हैं, और एट द एंड इट डजंट मैटर कि आपने जीएससी लिंक वाला ऑप्शनल लिया है या नहीं लिया है, डजंट मैटर। PSIR is entirely GS2 paper, right? But does it mean कि all top 20 people are PSIR? Doesn't mean, right? There are different toppers from different background, from different optional that get selected. So it depends on you ki how you will utilize it. Just don't prepare the subjects in the silos. Like open to other ideas, open to other subjects and everything. Anything else? Huh? Depend on your grip and your speed. Like paper completion is important. I used to use gel pen. एक पूरा जेल रिफिल 3 आवर्स में खत्म हो जाता था। डिपेंड ऑन यू कि आपको बॉल पेन, आपका हैंडराइटिंग किस में अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉपी लिखी थी 2 3, एक एक पेज अलग अलग पेन से लिखे थे, लाइक बॉल पेन, जेल पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ऐसा, और लोगों को दिखाया था जिनको कुछ नहीं पता है यूपीएससी के बारे में, क्या अच्छा लगता है, तो जेल पेन अच्छा लगता है तो मैंने ये ले ली। सो डिपेंड ऑन एस्थेटिक्स की थोड़ा प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, कंटेंट तो है ही इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप पहाड़ के डायग्राम बना के आए और मैंने ब्यूटीफाई कर दिया, ऑयल पेस्टल्स यूज किया और मार्क्स आ गए, ऐसा नहीं होता। कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम एस्थेटिक इज इवन इंपॉर्टेंट, सो you can choose it. It's a part of the preparation, it will be coming. Yes, anything else? नाही आलं तर नाही माहिती तर नाही सांगायचं, मला हे आठवत नाहीये आता, सिंपल. असं की किती किलोमीटर प्रवास केला आणि बसचं तिकीट किती होत, doesn't matter. That only happens with one coaching classes which have viral videos on the YouTube, but that doesn't happen in actual interview. Anything else? So interview questions were same. Just I just told my values in my second interview. In first, I just gave the mains like answers. I haven't cleared prelims in first attempt.
6 months before I just dedicatedly started for prelims. Due to overthinking, I just couldn't make it. Fine. Calm and composed mind is very important when it comes to the prelims. Nothing. Anything else? I think everything is fine. Okay. Thank you, everyone. Best of luck.